give an introduction because it's recording is going on. So yeah, I'm Dheeraj Chan. I'm second year, hopefully passed student. I just gave exams. So yeah, I've been doing Android for now more than a year now. Android has given me many opportunities, and yeah, hopefully you will get the same opportunities. Hopefully after learning from now. Okay, I will start my screen sharing, and that brought one person here, so that's pretty epic. Okay, I'll just click on Android Studio from here. Okie dokie. And I will stop presenting and present that particular window for better experience. My application. Okay, so I hope everyone has installed it and has opened their Android Studio. Okay. So I hope you all are also able to see my screen. So yeah, just if you are seeing something like this, okay, if you are seeing something like this, so just click on new project. Or if you are not seeing something, I think you will be seeing something kind of a screen, but you must be seeing something like new project there. So just click on new project, and you should be seeing something like this. Okay, now we are on that page. I'll just ask if there are any problems you are not here on this page or something. You can just talk with me right now. Just you can turn on your mic or hey Sandesh, we have just started, so कोई problem नहीं. So no problems. Okay. Now we some stuff like no activity, basic activity, bottom navigation, full screen. Okay. So ये सब क्या है? ये सब basically templates. Now what do I mean by templates? So to increase to make developer experience better. And what do I mean by that? Let's say मैं develop कर रहा हूँ Android applications. अब मुझे सारी चीज़ें scratch से नहीं बनानी. I want some how do I say bootstrapped or something जो मुझे develop करने में easy पड़े. So what do I mean by that? Let's say मुझे how to open a new project. So you can click on file. If you are using Mac, then you won't have anything like this here. You have to go to like the above this part, and then you will see something like file, and then you can go to new and then new project. And let's say मुझे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखनी चाहिए. क्या दिख रहा है मुझे? वो ऐसा ये दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा है. तुमने कुछ एप्लीकेशंस में भी देखा होगा where you see something like this plus button. तुम ऐसा बॉटम नेविगेशन दिखता है, मालूम है इंस्टाग्राम में नीचे होते हैं बटन्स टू गो टू प्रोफाइल, टू गो टू क्रिएट पोस्ट. सो वैसे नीचे बटन्स होते हैं. दैट इज दिस एक्टिविटी. सो व्हाट डज दिस मीन? अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो मुझे ये पहले से मिला हुआ मिलेगा. मुझे खाली अपनी चीज़ें डालनी है. सो दैट इज लाइक अ गुड फास्ट स्टार्ट, जिससे मुझे चीज़ें फटाफट चालू हो जाए. एंड आई डोंट हैव टू पर्टिकुलरली मेक ऑल द स्टफ अगेन, बिकॉज वो मुझे ऑलरेडी आता है. बट फॉर नाउ वी डोंट हैव टू डू. यू कैन सी यहाँ पे मैप्स है, जो एड्स आती है गूगल पे पे जो एक्टिविटी होती है वो सारी, जो लेफ्ट में नेविगेशन ड्रॉअर होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे. बट हमें वो अभी कुछ नहीं करनी है. हम लोग जाएंगे सीधा एम्प्टी एक्टिविटी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एम्प्टी एक्टिविटी एंड नो एक्टिविटी? एम्प्टी एक्टिविटी में हमें एक्टिविटी मिली होगी, बताऊंगा मैं क्या होता है एक्टिविटी. बट फॉर नाउ थिंक सम फाइल्स हैव गिवन टू मी, बट वो एम्प्टी है, बेसिकली उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा. और नो एक्टिविटी में मतलब सारी चीज़ें ही खुद से क्रिएट करनी है. सो आई विल जस्ट गो विथ एम्प्टी बिकॉज दिस इज एन आइडियल अप्रोच. नो एक्टिविटी में सेम चीज़ वापस करनी है, तो कुछ मतलब नहीं है उसका, राइट? सो आई जस्ट गो टू एम्प्टी एक्टिविटी. आई विल गो नेक्स्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन नेम. नाउ आज हम क्या बनाने वाले? हम बनाने वाले एक मीम ऐप, बिकॉज वाई नॉट. वी विल मेक अ मीम ऐप. मोस्ट स्पेसिफिकली it will be meme template app. Now what do I mean by that? We will have different templates जो हम API से कॉल करेंगे. No need to worry क्या होता है API. Just imagine कि एक जगह से हम लाने वाले हैं वो सब templates, and we're gonna make something out of it. Now it's gonna be a really awesome app. मैंने create नहीं किया, so I can't show the demo right now because I was super busy, but it would be super awesome. So just think of something really cool. For now I will name it something like May. Okay, sounds perfect. May. Okay, language will be Kotlin because हमने कल सीखी थी, but you can always select Java also if you are interested. But ये सेशन में मैं Kotlin ही सिखाऊंगा. What is minimum SDK?
तुमने कभी like if you have some old okay I have to get Himanshu Rai in. Hello Himanshu, we have just created new project. So Anam, can you just write something like file new project so that Himanshu can get started? और उसके बाद हमने क्या किया? Yeah. So मैंने नाम रख दिया. What is minimum SDK? Minimum SDK is something कि मेरा ऐप कौन से फोन में जाना चाहिए. Now what do I mean by that? यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट किया लॉलीपॉप. What does that mean? तुम्हें पता है एंड्रॉइड का ओएस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स. यू कैन सी हियर इट्स लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट और ये सारी नेम्स. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज मेरा जो एप्लीकेशन है वो खाली लॉलीपॉप में चलेगा. बाय खाली नहीं, लाइक इट विल रन टिल डिवाइसेस जिसके पास लॉलीपॉप है. एंड व्हाट डू आई मीन, अगर तुम्हारे पास लेट्स से किट कैट हो या जली बीन हो तो उसमें नहीं चलेगा. नाउ व्हाई आई एम सिलेक्टिंग लॉलीपॉप राइट नाउ by recommending by them, you can select empty one, empty activity. नाउ मैं लॉलीपॉप क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उससे नीचे जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट देर आर सम फंक्शंस जो नए वाले में बेटर चलते हैं एंड इट डजंट वर्क दैट गुड इन लाइक द ओल्डर वंस, लाइक न्यू कलर्स हो गए, न्यू कुछ स्टाइल्स हो गई, वो सब चीज़ें. सो आई एम जस्ट गोना सिलेक्ट लॉलीपॉप. नाउ सम पीपल ऑल्सो सिलेक्ट ओरियो और नोगट. नाउ ये डिपेंड करता है तुम्हारे फीचर पे. कुछ कुछ फीचर्स जो होते हैं वो एंड्रॉइड ओएस को, पहले वाले एंड्रॉइड ओएस को छोड़ देते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कुछ नई परमिशंस आ गई, कुछ ये आ गई जो लॉलीपॉप में नहीं चलेगी. सो यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली एट दैट डिवाइस. वो डिवाइस पे जब तुम प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने जाओगे तो वो लिख के आएगा योर एंड्रॉइड डिवाइस इज नॉट कॉम्पिटेबल विद दिस, इसलिए हम तुम्हें डाउनलोड नहीं करने देंगे. वैसा यू जस्ट कांट इंस्टॉल इट, ऐसा लिख के आता है. सो हम 5.1 करेंगे लॉलीपॉप. वी आर एबल टू run approximately under 98.1% of devices, so that is a good thing. Now मैं finish पे click कर दूंगा. You should select any name, ये name. Here, Yeah, here. yeah. I guess I can't. We can't really see what you're doing here. Wait, really? Oh wow, Are I'm you dumb. just sharing the Oh no, I'm answers? so Yes. dumb. I'm Yeah. really sorry. It's So fine. wait, you were not able to see from really long time. I'm super sorry. I'll just go back really quick. I should have said ages ago. Okay, I think okay, it's yeah. So I'll just go back. I'll just copy the name. So हमने फाइल पे गए, हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, हमने बात की क्यू एक्टिविटी एम्प्टी हम सिलेक्ट कर रहे हैं. और अगर तुम्हें कुछ पता है यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट बॉटम नेविगेशन जैसा वो इंस्टाग्राम पे और वैसा सब दिखता है. फुल स्क्रीन एक्टिविटी जब तुम प्राइम वीडियो और वो सब पे देखते हो तो वो पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर फुल स्क्रीन हो गई. पर अभी के लिए हम एम्प्टी एक्टिविटी करेंगे. नाउ हमें एक एप्लीकेशन का नाम सिलेक्ट करना है विच इज मे. ये जो मैंने अभी जस्ट बात किया वो सब ये है. तुम्हें जो एंड्रॉयड डिवाइस को सपोर्ट करना है वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा. बाय एंड्रॉयड डिवाइस आई मीन ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, लाइक एंड्रॉयड हैज लॉलीपॉप, डिफरेंट डिफरेंट ऑल दोस स्टफ. सो या, सो ये लॉलीपॉप हुआ. नाउ व्हाट डज इट सेज? यस, सो यू डोंट हैव टू राइट देम अगेन. ओके, वो क्या लिख रहा है? योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.1% ऑफ डिवाइसेस. और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज लॉलीपॉप इज सो ओल्ड कि उसके वहां से अगर यहाँ पे जाएंगे सो इट्स लाइक 98.1% ऑफ डिवाइसेस. बट लेट्स से मैं अभी ये सिलेक्ट करता हूँ जेली बिन, इट शोज 100% बिकॉज आई गेस जेली बिन वाज द फर्स्ट वन. आई हैव नो आइडिया, बट इट इज बेसिकली सेइंग कि जितने भी एप्लीकेशंस और डिवाइसेस हैं व्हिच आर रनिंग एंड्रॉइड राइट नाउ, माय एप्लीकेशन विल रन ऑल ऑफ देम. बट मुझे रिस्क नहीं लेना, सो आई विल जस्ट टेक फॉर राइट नाउ लॉलीपॉप बिकॉज सम ऑफ द फंक्शनलिटीज might break in those previous ones. Now I will click on finish. I will close this because मेरा ऐप जो है ये पीछे आ रहा है. Now it might take a little bit time, but अगर कुछ error हो अभी तक then you can talk with me. I talk, you can turn on mic if you're comfortable with that, or you can just share it on the chat. Yeah. Now it might take time if you have slower devices or basically on your, it will depend on your device itself. Yeah. No, Android Studio is a kind of software which will run slow Yeah. on every device. It is actually pretty heavy, and like Google is trying its best to optimize it. By optimize I mean उसको as effective as possible. build time, by build time I mean उसको रन करने में जो टाइम लग रही है वो सारी चीज़ें कम करने का ट्राई करता है. बट yeah, it takes time. So okay, give me some yes or something so that we can know कि हाँ build हो चुका है. It is heavy, but there are some ways जिससे तुम less heavy कर सकते हो. Like there is something called power saver mode जहाँ पे बहुत अच्छा ये हो जाता है लो.
Yes, give me a yes or something. Sef का हो चुका है. What about Himanshu, Sahil, Steve, Kush, Sandesh, Lorid? If you all I'm saying Lorid, yeah. अगर सबका हो चुका है, then you can just okay, I can start. So तुम्हें ये अच्छा दिख रहा होगा? धीरज, Yeah. by any chance can we use VS Code for this? No, actually, as far as I remember, Android नहीं चलता है VS Code में. You kinda do need this, but as far as I remember, अगर तुम्हारे पास how do I say? I guess you can. Yeah, I've like seen. as far as I know, you can have your emulator also ready, then Hmm. you can do. But the thing is that Flutter is a good thing जो पूरा SDK support कर पाता है. पर यहाँ VS Code में I don't think so Android की जो functionality Studios provide करता है, जो at least already build करना application Android Studio में slow है. But yes, it is very difficult. Plus, the how do I say? Functions which Android Studio provides, yeah, makes it easier a lot. While VS Code doesn't actually makes that much easier. But yes, वो ये तो होगा क्या बोलते हैं Yes, that is right. faster. Yes, Like we and can optimize Android yes, it applications. will definitely do less. And the reason Android Studio ज़्यादा लेता है because it provides that many functionalities too. It provides the database inspection, it provides the profiler, it provides literally so many things जो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. That is why it takes so much. And if you are not using your phone right now, then I will recommend you all to do use your phone right now rather than using your this thing. But अगर तुमने configure नहीं किया हुआ, so let's get started right away. We have already taken a lot of time right now. Okay. So ये यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा. If someone can just tell me क्या दिख रहा है यहाँ पे, I can know some part. Your Gradle is still building. No, it is done. Am I not showing properly? हाँ हो चुका. Okay. I So यहाँ wanted पे to अगर ask. कुछ नहीं दिख रहा हो, Can you guys also see the caption? caption. Where is caption? Okay. Dorit, can you just turn on your caption because you're screen recording, right? So it actually automatically gives a Oh yes, caption for what they are saying. Be a good thing. this thing. Yes, if you turn on your caption, you'll see that. Okay, epic. That's a great idea. Okay, now let's talk about this thing. If you're not seeing anything like this is showing my device name. But if you're not showing something, so it will show something like device manager, or just it will just show, I guess, add device. But I will highly recommend, if you have an Android device, then connect your device with USB like this, the way I have done. This you have to add this, and then you have to start USB debugging. Now I don't think so I can join via this, but if you want me to show, I can show it really fast. So I'll just show it in like 2 minutes. You have to go to settings. You have to turn on USB debugging. And why I'm saying this, it will help you build faster, because emulator will just take a lot of time. But if you have a good PC, no worries. Or if you have a good laptop, you can always do it with your emulator. I will just go to the summer bootcamp and get the link and join it. I hope it doesn't kick me because I'm from PC. Oh yes, I'm done. Yeah, I will just join it really quick. Till then, yeah, I will just join it. Okay, I have to move from here. Uh, 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 Share screen. Start sharing. Okay. Okay, I hope you all are able to see my screen. Can you? Okay, epic. Now I will go to settings. Now this settings will obviously differ, but as far as I know, you will always have a search function, right? So just search USB debugging. I already see USB debugging. I will go there. If you don't have developer options, you can, yeah. If you don't have developer options, you can go to your. Um, I guess it's different for all that, but as far as I know, you have to just go to some additional. It's for me it was in additional settings, but not yet. I guess it was.
But yeah, I think you can turn on your developer options. I guess सबको वो पता ही होगा कैसे करते हैं. Okay. But for those of you who don't know how to turn on developer settings, find build number. Yes. Yeah. I forgot that. Yeah. Find build number and then tap it repeatedly. Like फिर नीचे फिर एक prompt आएगा, tap it 4 times more, then you Yeah. will be a developer. So पहले वो turn on कर लो. Usually USB debugging comes under that. Now okay. Now you should be seeing this USB debugging. I clicked on that. I can see right here. I will turn on the click thing. Just give me 1 sec so that you all can see. Show tabs. Now you should be seeing USB debugging here. It's turned on. I will just turn off right now. You can see मेरा ये Realme चला गया. Got it? And the reason for that is, wait, can you even see? Yeah, तुम लोग देख सकते हो. So that is the reason it shows like that. Yeah. Now I will click on USB debugging. I will allow the USB debugging. Now it will be showing me here, and it's showing me here. Now अगर तुम्हारे पास मेरी तरह कुछ Realme ऐसा कुछ devices है, then okay. What did I click? Okay. अगर तुम्हारे पास Realme devices है या ऐसा कुछ devices है, then I can tell you one thing जो basically यहाँ पे जब तुम चार्जर डालते हो, then if you have Realme device like mine, you won't see Realme thing, you will see your device name. Just give focus in Android Studio and you should see. If you have Realme device or I guess MI, then you have to basically when you I will just show it right now. I will remove my device and I will add it. You should be seeing something like charge only, transfer files, photo, something like that. If you have Realme or devices like that, I have seen charge only not always works. I have to do something like transfer files, and that's when it starts showing me stuff. So that's one thing. Other than that, yes, that's all. I hope your thing is have started. So I'll just leave the meeting from here. अगर तुम्हें समझ में आया तो well किया हो. अगर नहीं चला तो बोल दो. इसको चार्जिंग ओनली से हटा के फाइल ट्रांसफर पे शिफ्ट कर दो. हाँ, अगर चार्ज ओनली से नहीं आया यहाँ पे, which means you can try the other option which is transfer files. यहाँ पे एजेंट कहाँ पे? यहाँ पे ये आएगा, Realme लिख के आएगा यहाँ पे. Realme नहीं, your device का नेम जो भी होगा. आया वो? It also provides something like pad. तुम्हारा Android हो तो you can always just scan your device और वो भी कर सकते हो. It also shows कहाँ पे जाके करना है. Okay, just I will wait for more 5 minutes. Tell me कुछ problem हो, कुछ भी हो. If you're not able to do it, और अगर हो चुका है तो yes डालो at least, so that we can know. Yes, you can use your wireless debug also. Yes. Okay, संदेश का हो गया. Okay, I think Steve का भी हो गया, और it is about just build. Okay, तुम्हारा भी हुआ. Okay. Like, any idea do you have in Samsung devices where do we get the debugging option? Sure. You can always just search online Samsung. It's no, it's a Samsung Galaxy M31s. I think every Samsung model have the same settings thing, I guess, if I'm not wrong. Yes. So you can always search Samsung USB debugging and it shows you how do you do it. Like, I'm searching USB debugging, but it's not coming. So can you go to your build number, which will be inside about phone in settings. Settings में जाओ and then you can click on about phone, which should be either in the end or you can just search or something. Yeah. Okay, are you There there? I have model number, serial number, and Build number ऐसा कुछ होगा. अगर build number नहीं है तो just randomly start clicking 7 times anything और तुम्हें लिख के आना चाहिए. So I hope मिल गया हो. हाँ, build number मिल गया. हाँ, उस पर 7 times क्लिक करो.
Fine, it asks me for my password. तुम्हें कुछ लिख के आना चाहिए नीचे that device developer option ऐसा कुछ enabled हो गया. हाँ, developer mode is enabled, right? Now you can search USB debugging तो वो दिखाएगा. Or you can just go to developer options by going about phone से एक बार exit करोगे तो तुम्हें developer option दिख जाना चाहिए. हाँ, USB debugging on किया. Epic. अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में एक बार जाके देखो, यू शुड सी योर डिवाइस नेम. हाँ, right. Yes. आ गया? Thanks. Okay. Okay, Saif, are you also done? But I hope you are Uh, using emulator. Actually, I was thinking maybe I should just use emulator. Just Yeah, if your eventually PC think is within. like powerful, I think it's fine for now. You can do that. Yeah, we can, but always help in the Discord after session if you need Sure. about that. Actually, I'll just use the emulator. Okay. What about you, Steve? What about Sahil? What about Himanshu? Sandesh is already done. Kush is already done. Okay, Himanshu is done. Sahil. Okay, Sahil is done. I think everyone is done. Okay, epic. I hope I'm screen sharing right now. Okay, I am. Okay, finally, let's get started. Okay, epic. We see same thing again. We see some classes. We see all the big brain stuff. No idea what it is. Okay, let's go in main activity. Let's see what all these things. Okay, this is import stuff. This is some package. Okay, what happened? Okay, this is some package. It shows com.example.meme. Meme is again our name of the application which we have done. So you can see on the left also. It's com then example. It is com then example then meme. So what is package? Package basically shows what folder the file is in. So my file is in basically inside com example meme, and it shows here relative to this thing. Okay, it's not gonna show the whole location. It will show from Java. Okay, that's understandable. Okay, what are these import things? Import things are basically calling different how do I explain import statements. In simple words, import statements is basically if we want to use something in that particular file, we are calling those files because we need some functions from it. So what do we need this app compare activity? You can already see we see some functions here. So if I just hold control and go to this, you should see something like the blue thing. Hold control and then take your cursor there. Don't click, just hold, and you should see something like this, and now click it, and you should now scroll the top up. You can see some package, copy it. You should see some package by scrolling the most up, copy it and then paste it. Are we able to see exact stuff? Are we able to see exact stuff? Are we correct? And why are we not seeing the app compare activity? Because when we have to import, we also need to import the. Sure. It's just to check. So you do control, hold control. You can see everywhere it shows blue. I go to app compat activity, this thing. I go there, I scroll the most up, I see package, I copy it and I just paste it. Now I can see that this app compactity is basically from this particular thing. And now while we are importing, we also kind of do app. Now you don't have to do these things. Now let's say if I just remove all the import statements, now we should be seeing something like error. Okay, let's see what are the errors. It says unresolved reference app compat activity. Now basically it doesn't know. Oh yes, log. Yes. So if you don't know any about what I was saying, okay, unresolved reference. What is that supposed to mean? It's saying that I have no idea what app compat activity is, and why it has no idea, because we never wrote code for it, right? We were always taking the code from a different file, so we need that particular reference here. Now we don't have that import statement. We just control. We just deleted it, right? So we go to the error code. Let's say this is the red thing. I just click here. It should already show something like this, but if it doesn't show, have alt and enter. Press alt and enter. It shows import create class. Obviously we need to import. We don't have to create our own code, right? We have to import it. So I just press enter and it imported the statements. Now can you see all the other errors went away? And why all those other errors went away? I will go to the file again. This is the file. I control this and I click here. Now I search Control F to search. By control in Mac is command. Control F. I search on.
capital C, don't do small c. Okay, Android Studio differs in that. I do basically on create. Okay, this is up and down. What is up and down here? Just finding what are the different. So it says next occurrence. I click here. Okay, next occurrence, next occurrence, next occurrence, next occurrence, and this next occurrence. So can you see all this on create stuff which we are using here? It has already been used here, and that is what we are using here, and that is what super directly comes here. Command F. Okay, yes, llama. Now we also have a bundle error. So let's press Alt Enter. It already shows us, but it will not always shows. It sometimes shows, sometimes doesn't. But we already know what to do. Alt Enter. Okay, now Alt Enter done. Now what is this class thing? Should I even explain class thing or okay? Let's understand in simple basic stuff. No need to go too deep. What is class here? Class is basically a concept of object oriented programming. What is object oriented programming? It is basically a way to write all those stuff in a more readable way rather than just writing different functions. And what do I mean by that? Think of it, a car. Car can be a class. Okay, just think. Don't need to think about what is class right now. I'll just open a screen share this and I will think, okay, class. So we have something like car and car as class. Now car has different models, right? Not different models. Let's say, okay, think of companies as different models right now. So we have, let's say, Audi. I have no idea what's the spelling, but I will just do AUDI. We have some Ferrari. Let's say there's this, and then we have some, let's say, what are the other cars? Let's say we have Hyundai. Okay, so I have such a bad way I write. Can you write text? Okay, thank you. It has some Hyundai. Okay, I have no idea what's the spelling, but yeah. So these are three models. Okay, these are companies, but for now think of it as a models or just companies. Now these companies are part of what? A class car, right? Audi doesn't. Audi is not just any company, right? It's a car company. What is Ferrari? Ferrari is also same as car company. I hope it's car company. Hyundai is also again a car company. So here the car is basically the class, and this Audi, Ferrari, or Hyundai, these are different what? It's part of it, right? Classes. If I'm part of some family, then I'm that particular part, right? My brother is that part. My sister is all those are particular parts, right? And that's what the classes or basically the oriented object programming is all about, where we have different classes, where we have different scopes, जहाँ पे हम उसके चीज़ों को define कर सकते हैं. So basically, as Himanshu said, it's totally correct. Audi, Ferrari, and Hyundai are basically the object of that particular class. So यहाँ पे it's a really simple way to understand right now. Now let's say हमारे पास एक और class है. Now let's say we have a class. Let's say we have class as school. Okay. Now a school में we have different objects. अभी मैं object बोलूँगा, अभी मैं वो models और ये सब भूल जाऊँ. Now we have different schools में objects है. Let's say we have FE, which is first year. यहाँ पे जैसे SE और यहाँ पे TE. Now TE is again was part of a particular school. So let's say I'm part of like the Thakur College of Engineering. So that Thakur College of Engineering has different objects, which is let's say first year, second year, third year, etc. Now this particular objects are different parts of that thing, right? So that's what I wanted to talk about right now. Now this okay, give me one sec. I just bullshit from the library, but yeah. So we have different objects. Now let's say no, not let's say, but the class not only has just FESCT as an objects, it can also have some different functions. जो हमने कल देखे, what are functions? These are basically some code of block जो एक particular piece, a particular name के अंदर आते हैं. So हमने कल क्या देखा? हमने देखा print धीरज, print anam, वो सब था. So what print धीरज was? It was a function जो print कर रहा था. Print anam क्या था? Print anam print कर रहा था. Himanshu one क्या था? Himanshu one print कर रहा था, right? So that is what a class can have different functions. यहाँ पे भी तुम देख सकते हो. It has some override, but उसके बाद एक function दिख रहा है, right? Fun. Don't think about override right now. Fun. और fun का नाम क्या है यहाँ पे? Fun का नाम क्या है? Just tell me what's the name here. Fun. Function का नाम क्या है? I hope I'm getting answers. ये जो function है, इसका नाम क्या है? ये particular function का? On create, right? Yes. So this is the function name on create, and this has some parameters जो हमने कल बात नहीं किया, आज बात कर लेंगे छोटे से small time में.
और उसके अंदर हम बेसिकली, तुम देख रहे हो ये कर्ली ब्रैकेट है विच इज अगेन यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ ब्लॉक, और वो ब्लॉक के अंदर हमारे पास कुछ कोड है, राइट। तो ये किसके अंदर आ रहा है, क्लास के अंदर आ रहा है। नाउ लेट्स से मुझे एक और फंक्शन लिखना है, सो लेट्स से प्रिंट धीरज, एंड मैंने कुछ ये लिख दिया, और बेसिकली हमने कल ही सीखा प्रिंट लाइन हमें ऑलरेडी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। नाउ ASDS है, अभी सिंपल लेट्स से मैंने यहाँ पे मैंने ये किया, अब मुझे लेट्स से प्रिंट धीरज को कहीं कॉल करना है, लेट्स से मुझे ऑन क्रिएट में कॉल करना है। अब मैं सिंपल कॉल करने के लिए क्या करूँगा, प्रिंट धीरज कॉल करूँगा, एंड वाई मुझे प्रिंट धीरज के अंदर कॉल करना पड़ रहा है, बट लेट्स से मुझे ऑन क्रिएट कॉल करना है, तो मैं ऑन क्रिएट कॉल करने के लिए मुझे ऐसा कॉल करना पड़ेगा, दिस देन डॉट ऑन क्रिएट, जो हमें ये दिख रहा है बेसिकली। एंड वाई हमें ये ब्रैकेट्स डालना पड़ रहा है और हम सीधा ऑन क्रिएट क्यों नहीं बुला सकते, वो सब की अभी बातें करेंगे। एंड ये चीज़ें आती है अंडर बेसिकली अ पर्टिकुलर स्कोप, जो मैं अभी बात कर रहा था वो आती है क्लास के अंदर, एंड दैट इज बिकॉज जो क्लास का ये जो चीज़ था ये किसके अंदर था, ये फंक्शन मेन एक्टिविटी के अंदर था, राइट। ये बेसिकली जो क्लास है, यहाँ पे क्लास है, सिंटेक्स क्या है, क्लास मेन एक्टिविटी, हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे जल्दी से। सो बेसिकली ये चीज़ हो गया उसके अंदर का, एंड दैट वाज द मेन रीजन कि हम यहाँ पे ऑन क्रिएट डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्रिंट धीरज जो है वो पार्ट ऑफ ये क्लास का नहीं है। और हमने अभी बात किया कि वो ये जो सारी चीज़ें होती है वो किस लिए होती है, टू टू हैव मोर रीडेबिलिटी, मोर पर्टिकुलर हैव अ स्कोप, जो हमें पता चले। अभी मैं अगर स्कूल के बारे में बात करूंगा और उसमें अगर मैं कुछ कार का जैसे ऑडी को डाल दिया, इट डजंट मेक सेंस, राइट, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ऑडी को मैंने स्कूल के अंदर बता रहा हूँ, बट यही मैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, क्लासेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, देन इट मेक्स सेंस, राइट। एंड दैट इज व्हाट क्लासेस आर ऑल अबाउट, वो पर्टिकुलर चीज़ों को उसी के अंदर रखना एंड बाकी लोगों को डिफरेंशिएट रखना। अब ये जो प्रिंट धीरज है, इट हैज नो मीनिंग ऑफ बीइंग इनसाइड मेन एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल हमें कुछ काम हो, राइट। एंड दैट इज व्हाई we need to have something like that is why this is all about is just the scope. Now टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, जो हमने जस्ट बात किया, ना ऑब्जेक्ट्स को मैंने समझ लिया, ठीक है, कार्स हैज डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑडी, ये सब चीज़ें, बट हाउ डू आई how do I write this in a code? Let's say I have a class here main activity. Let's think the main activity as car right now. Okay. अगर तुम देखो कि वो फाइल पहले कुछ अलग दिख रहा था यहाँ पे, इसको मुझे एक बार रिमूव करने दो, बट तुम्हें देख रहे हो वो कॉटलिन जैसा कुछ आइकन आया, पर जैसे ही मैंने ऐसा कुछ डाला, इट डजंट नो दैट प्रॉपरली बिकॉज वो क्लास के अंदर हमने नहीं रखा है, अभी हमने कुछ बाहर कोड रखा है। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ कोड समथिंग लाइक दिस, इट शुड बी ऑलवेज हैव अ प्लेस इन अ डिफरेंट फाइल और वैसा कुछ, बिकॉज बाहर रखने से कुछ मतलब है नहीं। इफ इट्स नॉट अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा, यू शुड जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट क्लास, नेम इट कुछ भी गार्बेज फाइल्स और समथिंग, बट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई इट्स शोइंग। बट फॉर नाउ हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम यही बात करेंगे। यस, नाउ लेट्स से हमने चेंज कर दिया नाम कार, ठीक। नाउ मुझे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो हमने कल ही देखा हम क्या यूज करते हैं, वार और वाल टू डू इट, यस, क्लीन, टू हैव अ क्लीन कोड। नाउ लेट्स से मैंने वाल रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने नाम रखा कार, तो हमारे कार का ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑडी, सो आई विल राइट ऑडी, आई होप द नेम इज करेक्ट। ये सब भूल जाओ क्या दिख रहा है, आई विल जस्ट प्रेस एंटर, ओके, ये क्यों हो गया, कंट्रोल जी, आई जस्ट प्रेस एंटर, ऐसा कुछ हो जाए, ऑलवेज डू कंट्रोल जी, वाई इज इट कैपिटल, ओके, ऑडी। अभी मुझे मेन एक्टिविटी की चीजें मेरे पास चाहिए, एंड हाउ डज दैट हैव, दैट्स वेयर द ऑब्जेक्ट कम्स, राइट, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट के बारे में ऑडियो एंड ऑडियो डिफरेंट, या सो ऑब्जेक्ट इज द थिंग जो कार को डिफाइन करता है सारी जगह पे, हम क्लास को लेके कहीं नहीं जाते। अभी कॉलेज मुझे डिफाइन नहीं कर रहा, राइट, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। इफ आई गो टू सम सेमिनार, कॉलेज नहीं बोलेगा कि हाँ धीरज का ये है, धीरज का ये है, आई विल बी द वन जो मेरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। Basically, Audi is the one which is representing car companies, right? Which is basically how do I say, representing car itself. मैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करूंगा मेरे कॉलेज को, ना कि कॉलेज मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, अदरवाइज मैं क्लास हो जाता। सो दैट्स व्हाट ऑब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। ऑब्जेक्ट जो होता है, क्लास इज एज अ स्कोप, ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो चीजें है उसके अंदर की सारी चीजें ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी हमारे पास क्लास के अंदर क्या था, एक फंक्शन था ऑन क्रिएट, राइट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ क्लास कार का, सो क्या मैं ऑन क्रिएट को मैं ला सकता हूँ कहीं पे, विच इज बेसिकली मैं ये फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, राइट। यही मैंने अभी बात किया। एक गिव मी अ गेस इफ यू अंडरस्टूड,
अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विच मीन्स वो क्लास के अंदर सारी चीजें मैं उसको ला सकता हूँ हर जगह. दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. सो लेट्स से मैं अभी एक क्रिएट करता हूँ वाल ऑडी. ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं लिखना है, वाल ऑडी. अभी हमारी क्लास का नाम क्या है? हमारे क्लास का नाम है मीन कार. सो हम लिखेंगे कार. And let's say, is it good enough? It shows classifier car does not have a companion object and thus must be initialized. अब ये क्यों बोल रहा है? बिकॉज कंपाइलर को कुछ समझ नहीं आ रहा. कंपाइलर ने बोला ओके ये कार लिखा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसने बस जनरलाइज्ड कुछ फालतू सा एरर दे दिया दैट इट डज नॉट हैव अ कंपेनियन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट सिंपल लॉजिक इज, हमें जो कार है हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाल रहे बिकॉज इट्स लाइक क्या बोलते हैं, रिडंडेंट है, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इनसाइड. बट जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वी नीड टू हैव समथिंग लाइक दिस. अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जब मैं लिखता हूँ वार ऑडी एस 5, तब ये कुछ मीनिंग, उसका कुछ मीनिंग है राइट, कि ऑडी को असाइन कर रहा हूँ मैं 5. बट जब मैं कार लिख रहा हूँ, डज इट मेक सेंस? डज इट एक्चुअली मेक सेंस? मैं एक वेरिएबल बनाया और मैंने क्लास डिफाइन कर उसको क्लास असाइन कर दिया. ऐसा हो सकता है क्या? It's just like totally dumb, right? You will be like, okay, Dheeraj, that's just super dumb because like you can't just assign a class, right? Like it's not some comedy show. So उसके लिए that's why we use something like this brackets. So what ये क्या बताता है कि ये basically कुछ क्लास है या कुछ डिफरेंट कुछ भी दूसरी भी चीज़ है. अभी ये सेम चीज़ फंक्शन भी हो सकता था, बट कार यहाँ पे हमारा जो क्लास है, तो उसको कंपाइलर को समझ में आ जाता है ओके यहाँ पे एक क्लास है और मैंने उसके आगे ब्रैकेट्स डाल दिया. सो इट नोज कोई ना कोई स्कोप वाली चीज़ें है और ना कि कोई वेरिएबल या कुछ सिंपल 5 नंबर नहीं है. तो नाउ इट नोज कि ये कार जो था वो क्लास था, और अगर कोई ऐसा असाइन कर रहा है विच मीन्स ऑडी इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट. अगर मुझे अभी ऑन क्रिएट बुलाना हो, अगर तुमने देखा था, ओके पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, आई विल जस्ट डू ऑडी एंड नाउ आई विल डू डॉट. ओके दैट्स हाउ वो चीज़ें चलती है. सी प्लस प्लस में कुछ डिफरेंट सिंटैक्स होगा, पाइथन में कुछ डिफरेंट सिंटैक्स होगा, बट कॉटलिन में हम डॉट डालते हैं. अभी हमें दिख रहा है तुम्हें कुछ चीज़ें, ऑन क्रिएट एक्शन बार फालतू फालतू चीज़ें दिख रही है. But can you see am? On create के आगे एक am है. And what does am says? अगर तुम्हारा ये नहीं दिख रहा, कंट्रोल स्पेस दबा के दिखा सकते हो. इफ यू डोंट सी कंट्रोल स्पेस, हाँ, इफ आई प्रेस डॉट, एक am दिखता है. And what does that mean? It's simple as saying that it's a method. Now what is different method and what is function as different? दोनों सेम है, बस नाम डिफरेंट है. सो दैट वी कैन नो ओके ये जो ऑन क्रिएट मेथड है वो इस क्लास का है, और यही फंक्शन होता है. तो फंक्शन हम सिंपल फंक्शन बोलते हैं. पर अगर मेथड आता है तो हम क्लास और ये सब के बारे में बात करते हैं. बट यू कैन ऑब्वियसली से फंक्शन अगेन इट्स द सेम थिंग. यस, मेथड इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ क्लास. यस, नथिंग एल्स. बस एक फैंसी वर्ड दे दिया है. अदर देन दैट इट्स ऑल सेम. बस उसमें खाली स्कोप आ जाता है, तुम हर जगह यूज नहीं करते अनलेस अनटिल यू हैव अ ऑब्जेक्ट. सो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऑडी एंड नाउ आई कैन डू ऑन क्रिएट. ना अभी भी वो एरर दे रहा है बिकॉज उसको कुछ पैरामीटर्स चाहिए थे. सो लेट्स टॉक अबाउट पैरामीटर्स. सिंपल से मैं फटाफट बता दूंगा. ऑलरेडी इट्स 5:48. सो या it won't be till 6. Did we talk about 6 or till 7? Because it will take some time today because we are gonna make an application. ठीक है. Talking about parameters, as we can see, saved instance bundle ऐसा कुछ तो फालतू सा लिखा है. So what do I mean by that is parameters is basically, अभी समझो मुझे एक फंक्शन है, ठीक है, मुझे फंक्शन करना है, जैसे प्रिंट इन धीरज था, बट मुझे खाली धीरज नहीं प्रिंट करना. मुझे जो मिलेगा वो मैं प्रिंट करूंगा. तो अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो आई विल राइट प्रिंट एनीथिंग, राइट? मेक सेंस? कुछ भी प्रिंट कराना है मुझे. लेट्स रिमूव ऑल द ऑब्जेक्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट ऑब्जेक्ट्स. इट वाज एज I tried my best to explain as easy as possible, but अगर कुछ नहीं समझा तो बता दो. I got one yes and I hope everyone agrees to that yes because कुछ और रिप्लाई नहीं है. Okay, yeah, okay. I will remove this. अभी ये प्रिंट लाइन है, ये भी रिमूव कर देते हैं. अभी अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है, now संदेश बोलेगा I want to print my name. तो संदेश बोलेगा संदेश प्रिंट कराना है, so I will write संदेश. बट लेट्स से यही टाइम पे मुझे स्टीव का भी नाम प्रिंट कराना है, तो अभी स्टीव का नाम कैसे प्रिंट कराऊंगा? अगर मैं स्टीव का नाम प्रिंट कराना है विच मीन्स वी हैव टू रिमूव संदेश का नाम. अगर हिमांशु का नाम प्रिंट कराना है तो संदेश का स्टीव का हटाना पड़ेगा, विच मीन्स इट्स ऑलवेज कॉलिजन. मैं अगर मुझे सबके नाम प्रिंट कराना है, मैं ऐसे लिख ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज इट विल ऑब्वियसली गो 1 2 लाइन, सॉरी लाइक दिस, ऐसा ये हो जाएगा. अगर ये तुम नहीं कर पा रहे हो, इट्स बेसिकली कंट्रोल डी. अगर कंट्रोल डी करते हो तो जो ऊपर का लाइन है वो नीचे आ जाता है.
अगर तुम ऐसे क्लिक करते हो तो ये ऐसे साइड में चला जाता है। ओके, सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट है, ऑलवेज यू कैन सर्च, नो वरीज। तो अगर मुझे जो नाम दिया है वो प्रिंट करना है तो मैं वो पैरामीटर में डालूंगा, एंड बाय पैरामीटर में डालूंगा सो दैट एनीवेयर आई कैन हैव दो स्टफ डायरेक्टली विथ मी, और मुझे यहाँ पे नहीं डालना है, मुझे ऐसा नाम नहीं डालना। ओके, वार स्टीव इज इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग डाल दिया स्टीव। ओके, सो ये नहीं करना मुझे, मुझे बेसिकली पैरामीटर में डालना। ना पैरामीटर में भी डालने की चीज़ें होती है, कल हमने ये बात नहीं की, बट अगर मैं वेरिएबल बनाऊँ एक, लेट्स से वाल, नाम दे दूँ नंबर। नाउ ये नंबर का टाइप क्या है? ना लेट्स से मुझे टाइप डिफाइन करना है, और ये टाइप हमें डिफाइन करना होता है जब हम पैरामीटर में डालते हैं, बिकॉज हमें बताना पड़ेगा, राइट? नहीं, तुम साइल यू कांट से इट्स आईएनटी, राइट? बिकॉज हमने डिफाइन ही नहीं किया उसको, हमने खाली नाम लिखा है उसका। अब नंबर जरूरी थोड़ी आईएनटी होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ नेम, राइट? नेम से कुछ डिफाइन नहीं हो सकता। ओके, सो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि नंबर को खाली आईएनटी देना है, जैसे यू सेड आईएनटी ही होना चाहिए वो, सो आई डू समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड I forgot the name. Semicolon? Semicolon, yes. ये semicolon होता है, और इससे क्या होगा? What? It's not a Oh no. semicolon. Okay, it's just colon. Okay, sorry. Just colon. Okay, yeah. Give me one sec. Yeah. I understood. Okay, so we do this colon, and what does this colon tells us is, उसके बाद मैं जो भी लिखूंगा, that basically it's type. So अगर मुझे string लिखना है, so I will just write string. ना अगर उसके बाद मैं अगर कुछ लिख दूं नंबर, then it will give me an error that you just can't give me a number जब तूने बोला है मुझे that it's a string. So I hope it is understandable. कुछ नहीं है, simple same concept है, it's just हम force कर रहे हैं इस बार variable को to have a type, correct? Now let's say मुझे assign नहीं करना हो value, अगर मुझे assign नहीं करना होता है तो this will give me an error. This will give me an error because आगे जाके कुछ भी assign हो जाएगा and I will never know. So अगर मुझे वैसा करना है, अभी डिफाइन नहीं करना, नाइस, एवरीवन सॉ दैट। अगर मुझे डिफाइन नहीं करना है देन आई कैन जस्ट शो द नाइस, दे कैन स्टिल सेट ओके, जस्ट स्टॉप lama. uh, yes, so okay, why am I so black here? Okay, epic. ओके, दैट्स दैट। सो अगर मुझे डिफाइन नहीं करना तो ये सब है, तो ये सब स्मॉल चीज़ है, नो नीड टू थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। पर आई गेस दैट्स प्रीटी मच क्लियर कि वो कॉलन क्यों डाल रहे हैं, जस्ट टू फोर्स अ टाइप, राइट? इजी, या लमा। नाउ अभी प्रिंट करना है मुझे एनीथिंग। नाउ एनीथिंग विल बी व्हाट? अ पर्टिकुलर नेम, अ पर्टिकुलर name. For now let's just do anything. So anything will be let's say print name right now. Okay, so मैंने डाल दिया पैरामीटर नेम, एंड ये सब कुछ चीजें बता रहा है, बट आई नो, अरे यार आई जस्ट कांट। ओके, आई नो द नेम इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग राइट नाउ फॉर मी, राइट? अब सैफ का नाम है तो सैफ इज स्ट्रिंग, धीरज स्ट्रिंग, हिमांशु इज अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट अ नंबर, राइट? सो I will just do what I learned right now. Where is my Android Studio? I will do something like this, a colon, and I will just say it's a string. Now अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। Now I don't have to think वो नेम क्या है, I will just print it here. You can see it's a P. Now what is P here? P is nothing but a I'm waiting for an answer. P is nothing but parameter. Yes. Okay. Then I hope ये भी समझ में आ गया parameters और ये सब चीजें. Now let's say मुझे Steve का नाम print करना है. I will copy the print name. I will print it here. Now अभी वो मुझे error देगा कि no value passed for parameter name. So let's say मैं डाल देता हूँ धीरज। मुझे स्टीव का नाम प्रिंट करना था बट मैंने खुद का लिख दिया, इट्स फाइन। नाउ फिर मैं कितना भी बार करते जाऊँ एंड इट विल जस्ट जो मैं डालूंगा इट विल जस्ट कीप प्रिंटिंग ऑन। सो आई होप पैरामीटर का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग अंडरस्टूड। नाउ लेट्स फाइनली गेट स्टार्टेड विद आवर एंड्रॉइड थिंग। लॉल, वी हैव वेस्टेड सो मच टाइम इन अ गुड लर्निंग टू लर्न गुड स्टफ, लॉल। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेस्टेड, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट ओके। तो अभी वो समझ में आ गया होगा वो चीज़। नाउ अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी नहीं है बिकॉज यू नो वी डोंट हैव अ ब्रैकेट हियर, पर फिर भी मुझे कॉलन दिख रहा है और मुझे कुछ ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी दिख रहा है जो हमने अभी देखा कि वो बेसिकली क्या है। बेसिकली ये कुछ तो चीज़ है पब्लिक सुपर, पता नहीं क्या है पर कुछ तो है। सो व्हाट डज दिस मीन? नाउ मैंने बात किया क्लास का। नाउ लेट्स से वी हैव अ क्लास स्कूल एंड वी हैव अ क्लास कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एक क्लास, एक तो स्कूल है ही क्लास, एंड देयर इज अ क्लास कंप्यूटर साइंस। आई विल शो इट वी आर हियर।
uh, okay, I will not show it from here because it's just super bad. I will just go whiteboard online. I hope I get a good whiteboard. Yeah, start a whiteboard. Is it started? Is it? Okay, it's loading. Nice, embarrassing. Okay, so we have a class. We have a class school. Why I'm saying cool? It is a college. No one is in college. Yeah, I will just increase the size. और एक हमारे पास class है computer science. Now just tell me this one thing. क्या कंप्यूटर साइंस हम डोंट थिंक अबाउट टू मच. ये सिंपल सोचो. देयर इज अ कॉलेज, देयर इज अ कंप्यूटर साइंस. खुद के कॉलेज का ही सोचो, ठीक है. नो नीड टू थिंक हायर स्टडीज और ऐसा अलग डिफरेंट सब्जेक्ट और ये सब. तुम्हारे कॉलेज में कैन कंप्यूटर साइंस लिव विदाउट कॉलेज? कॉलेज के बिना कंप्यूटर साइंस होगा तुम्हारे? मतलब अगर कॉलेज ही नहीं है देन देयर इज नो कंप्यूटर साइंस इन योर कॉलेज, राइट? देयर वोंट बी एनीथिंग बेसिकली. कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर. बट लेट्स से ये तो हो गया कॉलेज और ये हो गया कंप्यूटर साइंस. अब मुझे कंप्यूटर साइंस में अभी कॉलेज में तो आ जाएंगे सारे स्टूडेंट्स. ऑल राइट, कॉलेज में तो अभी सब स्टूडेंट्स आएंगे, राइट? कॉलेज तो डिस्क्रिमिनेट करता नहीं है. कॉलेज तो कोई क्लासेस तो है नहीं जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर साइंस और ये सब क्लास में डिवाइड करेगा. सो इट हैज ऑल द स्टूडेंट्स. बट कंप्यूटर साइंस इज लाइक नहीं, मुझे तो खाली कंप्यूटर साइंस वाले चाहिए. आई डोंट वांट कॉमर्स में कौन है, आई डोंट वांट आईटी में कौन है, आई डोंट वांट एनीवन अदर देन दैट. तो अभी कंप्यूटर साइंस को तो कुछ डेटा है नहीं, पर वो भी एक डिफरेंट क्लास है राइट नाउ. ओके, अगर मुझे कॉलेज का डेटा चाहिए कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज कंप्यूटर साइंस मैंने अभी बोला इट्स अ डिफरेंट स्कोप इटसेल्फ, राइट? उसमें कुछ अपना खुद का डेटा होगा. बट कंप्यूटर साइंस जो है कॉलेज के बिना रह नहीं सकता. कॉलेज में जो डेटा है उसमें से कुछ कुछ डेटा कंप्यूटर साइंस को चाहिए. और फिर खुद का वो जर्नल बना देगा, खुद का क्लासेस रख लेगा. लेट्स से एफ हो जाएगा, उसमें सेकेंड ईयर आ जाएंगे, थर्ड ईयर आ जाएंगे, करेक्ट, ऑल गुड. सो अगर मुझे कॉलेज की चीज़ें चाहिए, सो दैट्स वेयर द दिस थिंग कम्स. क्या आता है ये चीज़, विच इज़ वॉट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम डिफरेंट क्लास. कंप्यूटर साइंस जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलेज क्लास. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नथिंग. जो मैंने बोला वही उसका मीनिंग है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलेज. तो अगर लेट्स से अगर मैं ये हटा दूँ, तो हमने अभी देखा था कि जो ऑन क्रिएट है, सेट कंटेंट व्यू है, ये सब आ कहाँ से रहे थे? ये सब मेन एक्टिविटी के तो है नहीं. लेट्स चेंज द नेम टू मेन एक्टिविटी नाउ. अब मेन एक्टिविटी के तो कुछ पार्ट है नहीं, बिकॉज यू जस्ट कांट सी एनी कोड, राइट? इट्स लाइक उतना ही है, छोटू सा. तो उसके तो पार्ट है नहीं, विच मीन्स इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. एंड दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लास. अगर तुम ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी में जाओगे तो यू विल सी द होल क्लास हियर. ये चीज़ यहाँ पे क्लास दिख रही नहीं है. Yes, it is an inheritance. Yes. So basically, in simple English word, it means inheritance. Simple English word में क्या ऐसे ही उसको inheritance ही बोलते हैं, which is inheriting stuff from different thing. अब inheritance कैसे हो रहा है? I will talk about that. Can you see something like this super thing? Super. What does that mean? मेरे पास कॉलेज में एक फंक्शन था जो मुझे डेटा देता है कंप्यूटर साइंस पे सारा डेटा देता है एक साथ, राइट? सो दैट विल से कंप्यूटर साइंस बोलेगा ओके मेरे को वैसा कुछ चाहिए, मेरे को खुद का कंप्यूटर साइंस का फंक्शन चाहिए. पर पहला चीज़, आई वांट ऑल द स्टफ जो कॉलेज में हो रहा है कंप्यूटर साइंस का चीज़, वो पहले यहाँ ला दो. एंड दैट इज व्हाट हियर हैपनिंग हियर. अगर तुम ऑन क्रिएट में जाओगे ना, ये सारी चीज़ें हो रही है. ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है पहले. एंड देन वी आर डूइंग समथिंग एल्स. सबको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, इसीलिए हमने सुपर डॉट डाला. अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अगर सुपर डॉट हटा दे, वर्क करेगा. व्हाई? बिकॉज द नेम एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट करता है. बट हमें फिर भी एक एरर मिलता है. व्हाई? ओवरराइडिंग मेथड शुड कॉल. अब ओवरराइड के बारे में हम बात करेंगे. तो इतना समझ में आ गया सुपर क्यों काम कर रहा है. सुपर इज बेसिकली वाई देयर, बिकॉज हम किसी और की चीज़ें ला रहे हैं, और किसी और की नहीं, हमारे सुपर क्लास. व्हाट इज सुपर क्लास हियर? जो हम जिसे हम इनहेरिट कर रहे हैं, करेक्ट? सो व्हाट इज ओवरराइड? अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं इंग्लिश में ही, व्हाट डज ओवरराइड मीन्स?
कोई भी turn on, but why I'm saying turn on is it's called turn on only, right? Yeah, just turn on mic and anyone can say what does override means. Yes, unmute Lord. That's why I was feeling weird. Okay, unmute your mic or you can just type something in simple English, Hindi, anything. Override का simple English में क्या मतलब होता है? You can read what I said, Lord. What? Yeah, override का simple English में क्या मतलब होता है? Like, what does override means? Ignore. No, it doesn't. Ignore. No. What? Am I audible? What's happening? Yeah, what's happening? Kinda correct, kinda not actually correct. So now that I'm not getting that response, what does override mean is कुछ है डेटा, उसके ऊपर मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ. If you remember last session, yes, हम बात कर रहे थे that Kotlin was something related to Java, right? So what did I say? Java was there. उसके ऊपर कॉटलिन आया, उसने जो भी चीजें देखी खराब है, जो भी चीजें है, और उसने अपने फीचर्स डाले, राइट? दैट्स व्हाट वी सेड. सो यू कैन से जावा वाज द सुपर क्लास, कॉटलिन इज समथिंग, उसके कुछ तो फंक्शंस उसने यूज किए और उसने ओवरराइड की चीज है, राइट? दैट्स व्हाट इट डेड. और वो हम चीज यहाँ भी वही कर रहे हैं. हमने ऑन क्रिएट कॉल किया दूसरे का, बट वी जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? हमें कुछ और भी चीजें करनी है उसमें, तो हमने इतना लिखा, ओवरराइड किया, एंड देन वी आर पुटिंग आवर स्टफ हियर. समझ में आ गया सबको? I hope everything is clear. It's like super simple. No need to think क्या saved instance test है, ये सब क्या है. हम अभी इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, you know. Just ignore कर देंगे सीधा. Okay. Good enough. Now let's close everything. Finally, let's get started. It's already 6 and 1 hour में हम app complete कर देंगे. Hopefully. Now let's go to activity main.xml. देखते हैं अब ये क्या है. Let's close. यहाँ पे project पे click कर दो, तो ये साइड में चला जाएगा because अभी वो चाहिए नहीं. ठीक है. I dropped some water. Okay. All good. XML more like HTML. Okay. What kind of app we are making? We are gonna make a meme template. It will have different. If you remember that Rasa bot I made, I'm gonna do the exact same thing because मेरे पास ideas ही नहीं थे. So yeah, we're gonna have different meme templates. अगर time मिला तो हम ऐसा भी कुछ करेंगे that one person can create their own meme by adding stuff there. और अगर नहीं time मिला then we'll see something. Okay, but at least meme template हो जाएगा. So are we all ready to get started, man? नहीं, और शायद 5 minutes का work है to make you understand all this. Then we can actually get started with working. Okay, talking about all this thing, some different greater than, less than, question mark, UTF-8 version 1.0. अच्छा ठीक है, उड़ा देते हैं, you know, like it feels like some dumb data. Okay, कुछ error भी नहीं आया. Okay, कुछ error नहीं आया, ठीक है. ठीक है. Now let's do something called okay, let's try to understand Android. It's like you can think of, it's not actually HTML, so XML is also another type of language. I don't know how to explain or define it. It's basically some extensible markup language. I think E is basically your how do I say, silent. Yes, Lord. Yeah, I didn't know how to define it, but yeah, let's talk about the stuff which is here. So in XML, it is kind of like an HTML, but it can have different stuff inside it. Front end, yes. So yeah, this is one way to have front end. The other way we won't talk today because it is way beyond of what we are gonna do right now. That is also easy, but yeah. So we see something like constant dot vjet dot constant dot androidx. So first thing, as usual, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, hold control and just try to go somewhere. Okay, I see constant layout. Let's go there. Okay, I see a dot java. Library source does not match the. Okay, ignore that. I see some hash maps, some sparse array. I have no idea what is sparse array. Some shared values, etc. Okay, all those weird stuff, which means it's just not understandable.
What is this widget thing? Okay, it doesn't go anywhere. Okay, never mind. So basically, as you saw, जो अभी हमने देखा, that is nothing but an class itself. Even though वो सब चीजें कर रहा है. So obviously it's simple as that. अगर कुछ हम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं एप्लीकेशन और कुछ भी, there is something which is going on there जो ये define कर रहा है, right? कि hello world कहाँ रहेगा? It's not like we are writing code and it's automatically happening. वो कोड के पीछे कुछ ना कुछ there is something which is checking कि वो कहाँ आएगा, what is that thing, what will define this. Understandable? So that is what this different this thing is doing. अब ये क्या है? If you see this, it is similar to what we were seeing in import statements. Can you see Android X, app compat? So यहाँ पे भी कुछ Android X है, कुछ constant layout है, कुछ widget है. Understood? Okay. Now let's talk about how we build stuff in Android. Now, as I said, there are two ways: Android XML and other is Jetpack Compose, which you can give it a try, but it's way too early for you to start. You can just focus for this on make some projects via this, and then also you can explore that. Okay, we see some layout. So there are different ways of layout. I think I already have that tab open to make you understand in easiest way. UI layout. I will go here. It has way more than those layouts, but okay, let's just start from here itself. Okay, let's go to design. हमें different stuff दिख रहा है. We don't have to think much on that. I go to palette. Can you see palette? Everyone can see palette. Just give me a yes. It's on the left. Palette. Yes. Okay. I click on palette. I see common tags, buttons, widgets, layout, containers, helpers, Google legacy, some weird stuff. Okay. Yeah. Now I see text view. Okay. Let's see what is text view. I click on this. Okay, nothing happens. Let's say grab it. Okay, I see something coming here. Okay. I do. Okay, something came text view. I have no idea what happens. Okay, let's go more on this. I can do something like this. Can I do this? Okay, I can move this, but I see some lines regarding this. Right, around there is some lines. Even though I'm able to move it everywhere, but there are some wires kind of thing, right? So that is what constant layout is. If you see here, by the way, palette is where you can have all that stuff. You can see everything which Android supports and all that stuff. But yeah, I don't support this grabbing and doing stuff because yeah, it just takes way more time. I prefer code and that's my opinion. But let's remove this extra text view which was coming. The constant layout is about all having constraints. What do I mean by constraints? Like okay, if this is the screen, then I'm telling that hello world will be this much from above, it will be this much from left, it will be this much from right, and it will be this much from how do I say bottom. So let's say I remove this text view which we are seeing here, control X because I need it later on. Okay, it just went away, but constant layout exists. So remember what we talked about classes earlier, having a different scope, we can have the same stuff here. So if I want to do something like this, it comes here. So whatever is inside constant layout, it will be there. Now there is another thing about constant layout or anything, you just can't remove this. Obviously, I see one problem. It says it said one root tag. What does that mean? That should be always one parent. You need one layout, one of the layouts which we'll be gonna talk now. वो होना ही चाहिए. Now let's not go too deep into layouts. Let's just talk about constant layouts and let's talk about linear layout and let's talk about relative layout. So constant layout के बारे में हमें थोड़ा पता चल गया. What does it means? Left, bottom, right, जितने भी चीजें होती है उनके साथ वो constant रहता है. नाउ बाय बॉटम लेफ्ट राइट ये तो डायरेक्शंस बोलती है. यूजुअली खाली दो ही चीजें होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. अगर मैंने बता दिया कोई भी कंपोनेंट, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ कंपोनेंट राइट नाउ, अगर कोई भी कंपोनेंट को मैंने बता दिया कि ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रहेगा और एक वर्टिकली यहाँ पे रहेगा, दैट्स व्हाट कांस्टेंट लेआउट मींस. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके कैन यू सी दिस लेआउट कांस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, ये दिख रहा है बॉटम टू बॉटम ऑफ, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, तुम्हारे पास भी सेम रहेगा. ये बेसिकली क्या बोल रहा है? इफ यू सी एन इक्वल, कुछ पेरेंट दिख रहा है. व्हाट डज पेरेंट इज हियर? पेरेंट इज बेसिकली द होल स्क्रीन इटसेल्फ. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दिस पेरेंट इज, यहाँ पे पेरेंट ये है कांस्टेंट लेआउट,
बट अगर तुम कॉन्स्टेंट लेआउट का विथ देखोगे, हाइट देखोगे, वो क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैच पेरेंट. व्हाट इज मैच पेरेंट? यहाँ पे पेरेंट क्या है, कॉन्स्टेंट लेआउट का पेरेंट क्या है, द होल स्क्रीन इटसेल्फ. करेक्ट? गिव मी अ यस इफ यू अंडरस्टूड व्हाट डू आई मीन बाय दैट पेरेंट. एक पूरा फोन है, फोन के अंदर वी हैव अ लेआउट एंड लेआउट वांट्स टू मैच एवरीथिंग. व्हाट डू आई डू दैट? आई डू सिंपल मैच पेरेंट. अगर मुझे लेट्स से देयर आर टू वेज टू डू इट. ओके, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस लाइन. मैं इक्वल तक रिमूव कर दूंगा बाय इक्वल, और उसके बाद फिर और एक इक्वल कर दूंगा. नाउ आई विल राइट द सेम स्टफ अगेन. आई विल डू लेआउट. लेआउट लिखने में तो सब टाइम चला जाएगा. आई विल जस्ट डू विथ. कैन यू सी रिक्वायर्ड हियर एंड व्हाई इट सेज ओके, व्हाई डज इट सेज इट्स रिक्वायर्ड? बिकॉज जो पेरेंट है और उसका विथ है वो तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, राइट? यू कांट से कि हाँ विथ मुझे डिफाइन ही नहीं करना, आई जस्ट वांट टू डिफाइन हाइट. डजंट मेक सेंस. ऑब्वियसली देयर विल बी small to small, but there will be some width, right? Makes sense, correct? Right? No, like obviously a component needs some width, right? It just can't stay out of the box with just height. So that is why every component needs a width and a height. Now let's say I write width. अभी enter कर दो, ठीक है? Enter. Now we see 2 points. Match parent, wrap content. Now what does it mean by match parent, wrap content? Match parent is parent का how do I say, the it will just take over all the space जितना parent में किया. So constant layout के लिए parent क्या था? Give me constant layout के लिए parent क्या था? Give me an answer for that. Constant layout के लिए जो हमारा ये चीज है, यहाँ पे हम जो मैच पेरेंट लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैच पेरेंट, उसके लिए पेरेंट क्या था? इट इज मैचिंग टू इट्स पेरेंट, बट यहाँ पे उसके लिए पेरेंट क्या था? द स्क्रीन, राइट? करेक्ट. Give me 1 sec. Okay, so the screen, right? तो यहाँ उसके लिए मैच पेरेंट वो था. So let's say मैच पेरेंट किया मैंने, so what does it saying? वो पूरा पेरेंट को मैच कर देगा. What does it mean? अगर मेरा इतना स्क्रीन है फोन का, you can't see because of the stuff which I have it. Apply visual effect. Okay, ये फोन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. ओके गुड. सो ये जो फोन दिख रहा है उसमें जो स्क्रीन है, इट्स गोना टेक ओवर ऑल ऑफ दैट. व्हाई? बिकॉज इट्स द फर्स्ट पेरेंट. अगर यही मैंने रैप कंटेंट किया होता तो वो रैप कंटेंट क्या होता, उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो जितना लेगी उतना ही मैं स्पेस दूंगा. सो लेट्स से मेरा स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा है, एंड इफ आई गो हियर, लेट्स से I have this nice. I can't hover. Why can't I hover? Okay, I'll just make. Okay. मेरा ये जो स्क्रीन था, मैच पेरेंट मतलब क्या, पूरा स्क्रीन ले लेगा जितना भी है. नॉट ऑलवेज, ओके, ओनली फॉर द फर्स्ट पेरेंट. बट लेट्स से मैंने रैप कंटेंट किया. रैप कंटेंट में लेट्स से मेरे पास कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो वो उतना ही स्पेस लेगा. इट वोंट टेक दिस मच स्पेस बिकॉज हमने रैप कंटेंट किया. नॉट ऑलवेज, only for the first parent it will go for the whole screen. Why? Because the parent जो है स्क्रीन है. बट यही अगर तुम ये देखोगे टेक्स्ट व्यू में हमने रैप कंटेंट किया. वाई रैप कंटेंट किया? बिकॉज डिड आई रिमूव समथिंग? ओके, मेरे को यहाँ पे मैच पेरेंट करने दो. ओके, नाउ यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड आया वो मैच पेरेंट नहीं है, वो पूरे स्क्रीन में क्यों नहीं जा रहा? वेट, हाँ, सो इसका जो विथ है यहाँ पे रैप कंटेंट है. तो व्हाट डज दैट मीन? जो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे दिख रहा है, डोंट थिंक क्या है टेक्स्ट व्यू, आई विल एक्सप्लेन, पर वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसमें जितना वो लेने वाला है. Match parent take the same value of width and height as the first parent. Not first, yes, first parent, yes, you are correct. Basically एक ही parent होता है, so first parent और parent is basically all the same. Okay, so इतना समझ में आ गया what is difference between wrap content and match parent. Wrap content is basically उतना ही space लेगा जितना डिफाइन कर रहा हूं मैं. इफ आई एम सेइंग एक टेक्स्ट व्यू है 35 पिक्सल का, देन टेक्स्ट व्यू उतना ही स्पेस लेगा. बट लेट्स से यहाँ पे तुम, ओके, कैन यू सी द बॉर्डर अराउंड इट? हेलो वर्ल्ड, तो इतना ये तो दिख रहा होगा कि कितना स्पेस ले रहा है वो. कैन यू सी द बॉर्डर अराउंड इट? यू कैन डू प्लस बाय द वे टू सी. कैन यू सी द बॉर्डर अराउंड इट? राइट, विच इज शोइंग कि वो उतना स्पेस लेगा. बट लेट्स से नाउ आई डू मैच पेरेंट, इसको मैच पेरेंट कर दूंगा. नाउ कैन यू सी उसका विड्थ कैसा हो गया? उसका विड्थ कितना ये हो गया,
It took the whole screen. And why it took the whole screen? Because उसका जो parent था वो screen के उधर ये हो चुका है. So basically इसके लिए match parent है constraint layout. Constraint layout का width क्या है? As same as match parent. Constraint layout का width क्या है? Match parent और वहाँ पे parent क्या है? Basically screen. इतना it sounds complicating कि इसका but you don't have to think that much. You just have to think this and उसका parent. You don't care कि उसका parent कौन था, उसका parent कौन. Got it? Now talking about text view itself, let's go back because it looks really bad. Now talking about, we can set this design tab also. Yes, you can do it, but यहाँ पे जो चीजें लिखनी होती है that is faster. Why I consider that faster? Because यहाँ पे design जो होती है वो एक यहाँ पे रखो, then you have to do that way, and it's like more over a static way. अगर तुम देखोगे, अगर मुझे बोला यहाँ पे ये है, तो it's not for all devices same, because तुम यहाँ पे देखोगे कि डिवाइस का नाम बता रहा है खाली इतने के लिए, इतने के लिए. बट इफ आई एम डूइंग समथिंग फ्रॉम हियर, मुझे पता है उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज देखो इट इज डायरेक्टली गिविंग मी कोड सम डीपी. अभी वो सामने दिख रहा है दैट इट इज गिविंग मी रैंडम नंबर्स. व्हाई? बिकॉज मैंने उसको वहां पे रखा. नाउ आई डोंट नो वो रैंडम नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, राइट? इट हैज टू बी प्रॉपर्ली. सो उसमें बहुत टाइम्स आता है, लाइक आई विल जस्ट डू दिस वन थिंग हियर, सम weird. I will talk about what I'm doing right now, but ये सब चीजें कुछ अजीब डिजाइन है which I can do it really quick from end of that and all that, and it works like just one enter and it's really quick. But you can always do that way also as you wish. It's my opinion. I like to do it this way, but yeah. So where do we get this code? On the left which side. document? Wait, या लाइक अगर मेरे को टेक्स्ट व्यू बनाना है तो मैं वो टेक्स्ट व्यू का कोड कहाँ से लेके आऊँगा? all you do is you write this, you do text view, you see text view already ready. एक with देना है, एक parent का जो भी तुम्हें लगता है, जो भी है rep parents जो भी है, then there are different functions. अब वो different functions जितना तुम not practice, जितने applications बनाते हो, जितना explore करते हो, उसके बारे में पता चलता है. अब मुझे पता है text view में एक text होगा, right? उसी के वजह से hello world दिख रहा है यहाँ पे. Okay, let me remove this dumb progress bar. ये टेक्स्ट की वजह से हेलो वर्ल्ड आया. सो आई विल डू समथिंग लाइक टेक्स्ट हेलो धीरज. तो यहाँ पे धीरज दिख जाएगा तुम लोग को. आई जस्ट जूम इन. यहाँ पे टॉप मोस्ट पे आ जाएगा. एंड नाउ सो आई होप एटलीस्ट दैट वाज अंडरस्टैंडेबल. Yes. यू कैन जस्ट सर्च उसकी प्रॉपर्टीज क्या. यू कैन जस्ट टाइप एंड्रॉइड और तुम्हें 100 चीजें दिख जाएगी. Literally that many stuff, but obviously not everything is supported by all the stuff, so wo bhi hai, but the more you explore the more you get. It's like super easy to do stuff in Android, not gonna lie. Yeah, now obviously to close this I press slash and wo automatically complete kar deta hai. But I see one error here. What does it say? The view is not constant. मैंने अभी बात किया था constant layout means constant होनी चाहिए views. What do I mean by constant? तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये exactly कहाँ रिसाइड कहाँ एग्जिस्ट करता है. अगर तुमने देखा ये धीरज सीधा टॉप लेफ्ट चला गया. व्हाई डिड इट गो टॉप लेफ्ट? क्योंकि मैंने उसको ना हॉरिजॉन्टल बताया कहाँ पे, नहीं मैंने बताया उसको वर्टिकल है. तो जब भी तुम नहीं बताओगे इट विल ऑटोमेटिकली गो अप. भले तुम यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखा दो, but it will always go up unless and until you give the constraints. You can also see, so it will jump to 0 at runtime. Now what is 0 here? Basically the start of particular screen. Understandable, simple as that. Text view से तो समझ में आ गया होगा text view है क्या. Basically it's a view which shows text, right? Correct? All good? Okay, now finally let's get started. I have already taken so much time to explain it, but I hope you all understood everything properly जितना समझ आना था. Now we will talk about constraints और कैसे करनी है चीजें, but for now just understand it. I'll just turn on lights because this is pretty hot if I have this light on. Okay, I'll be back. Okay, let's dive into the application. Other than that we have relative layout, linear layout. Linear layout में क्या होता है, हमें constraints नहीं देने होते. वो एक के बाद नीचे आता रहता है, या फिर एक के बाद साइड में आता रहता है. सो यू डोंट हैव टू गिव कंस्ट्रेंट्स बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ है तो उसको पता है कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा. अंडरस्टूड? मेक सेंस? व्हाट इज अबाउट लिनियर लेआउट? एज इट सेज लीनियर होने वाली है सारी चीजें.
ऑलरेडी उसको पता है कौन नेक्स्ट वाला चीज कहाँ आएगा. ओके गुड. If I want to give one example, I will just type linear layout. I can see linear layout right now. Wrap content. Let's say I do 200 dp. ठीक है, खाली बताने के लिए I'll just do नहीं match parent and height I will give 200 dp. Now what is dp here? No, not like the scroll pages. I will explain you. Give me one sec. What is dp here? I forgot the full form of dp. Nice. Lol. Dp. I guess I can search Android. It's something with pixel, but I forgot. DPI are the pixel per inch. No. What is DP? DP is pixel unit, but what's the full form? Okay, density independent pixels. Okay. So basically these are the pixels which Android has defined. यहाँ पे जो चीजें तुम्हें जो दिखती है, that is 111 pixels, और यहाँ पे जो चीजें हो रही है, that is what DP itself. Now we have something called DP or SP. Now I won't go much deep into DP SP, but DP जो होता है वो density independent होता है. So let's say if your phone has some different settings, तो DP is independent as the name suggests. तो वो थोड़ा डिफरेंशिएट करता है चीज़ों से. बट अगर एसपी चीज़ें अगर यू हैव एसपी और समथिंग देन वो टोटली डिफरेंट चीज़ें करता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू डू एज अ सेटिंग्स. इसलिए वी प्रीफर जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो ट्राई टू डू विद एसपी. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर. आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. ओके, हम जब लीनियर लेआउट किया मैंने, तो देखो एक कुछ ऊपर चीज़ें दिख रही है, कुछ दिख रहा है ऐसा. इफ़ यू राइट लीनियर लेआउट 200 डीपी किया, कुछ ब्लर सा चीज़ें आता है. कुछ सबको आ रहा है कुछ ऐसा? जब तुमने लीनियर लेआउट किया, कुछ हाइट दे दो 200 dp 100 dp जो भी तुम्हें देना, एंड आई विल गिव सम कंस्ट्रेंट्स. सो आई विल डू टॉप टू टॉप ऑफ, विच इज टॉप से कहाँ जाना है, विच इज ऑब्वियसली पेरेंट. सो आई विल जस्ट राइट पेरेंट राइट नाउ. तो वो टॉप टू टॉप रह गया, एंड टॉप टू टॉप रह गया, एंड द अदर स्टफ इज बॉटम टू बॉटम. नो सॉरी, सो वर्टिकल हो गया टॉप टू टॉप, मेक सेंस. अब एक हॉरिजॉन्टल देना है. सो हॉरिजॉन्टल कहाँ रहेगा? आई कैन जस्ट से दैट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ. अगेन आई विल जस्ट से पेरेंट बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स. एंड देखो, अगर वो देखोगे तुम एरर जा चुका है. नाउ विल जस्ट डू दिस. वार्निंग दे रहा है, इट इज अननेसेसरी बिकॉज यू नो इट डजंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, बट वी विल ऐड इट. सो मैंने अभी तुम लोग देखोगे ये मैंने हटा दिया. वाई? बिकॉज आई नीड समथिंग इनसाइड इट. सो मैं यहाँ पे करूँगा और मैं स्लैश डाल दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है. दिस इज सिंपल स्टफ, बट यू कैन, इट्स लाइक सेम एज HTML, नथिंग एल्स. अब मैं लीनियर लेआउट में ये कॉपी कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड. आई विल जस्ट राइट दिस. अगर तुम देखोगे दोनों साइड में आ रहा है. Can you see? They both are in the side. Exact side. This is literally what I was talking about. या तो साइड आता है या तो वर्टिकल आता है. अगर तुम्हें वर्टिकल करना है, then you can go here and I think it's something with if I just do horizontal or something, I forgot the property. It's called it's been ages using Android. Anam, do you remember the property to do it? It's called I forgot the name. यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए कंपोनेंट ट्री में. Orientation, sorry, yes, Lama. I just keep forgetting the English words. Okay, orientation. So I will just do orientation. अब orientation में you don't have to remember, you can do Google search. No need to remember anything. But अभी के लिए वो vertical था. So I will just do okay. I will just do हाँ, अभी के लिए वो क्या है, horizontal था. Now I will just do vertical, and वो दोनों नीचे आ गया. Make sense? All good. Linear layout easy. Now, obviously, you don't have to exactly have below. I can always have some margin. So I can say margin top. Let's say I do 20 dp. अब वो थोड़ा नीचे आ गया उससे. Make sense? तो ये सारी चीज़ें भी होती. But for now, let's just close it really quick. We are already pretty much late at 6:24, so let's complete it quick. Okay, now what we are going to do is we are going to create a meme template app. I'm going to use this API to get some memes. Yeah, so एक बार postman में open करके देख लेते हैं कैसा है exactly. Okay, everything is clear, right? Just give me a yes if everything is clear right now.
It might seem too much कि हाँ कुछ सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. You don't have to learn anything. Google is always there. Google everything. Okay, it's already there. I do get memes, and I get some good amount of templates. Good enough? Good enough? Okay. हाँ, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, तो वो लाइब्रेरीज हम डालते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में. बिल्ड ग्रेडल. आई वोंट गो टू मच डीप इनटू व्हाट इज बिल्ड ग्रेडल और ये सब. थोड़ा लेंथी हो जाएगा, एंड वी ऑलरेडी हैव लेस टाइम. यू कैन ऑलवेज सर्च व्हाट इज बिल्ड ग्रेडल, एंड इट्स इजी एज दैट. वो लोग के पास कंटेंट बहुत अच्छा लिखा होगा. Basically, जैसे अगर वेब डेवलपमेंट किया हो, देन यू हैव पैकेज डॉट जेसॉन, जहाँ पे तुम लाइब्रेरीज डालते हो. बिल्ड ग्रेडल इज सिमिलर टू दैट. हम लाइब्रेरीज का नाम डालेंगे, एंड इट इज इजियर फॉर अस टू इंस्टॉल. कैन यू जस्ट स्टॉप इट? या इट इज सिमिलर एज दैट. नाउ हमें 2 लाइब्रेरीज चाहिए. वन इज रेट्रोफिट, another is I forgot the name. Online image library, Android. I forgot the name. Because okay, yeah, Glide. We need one retrofit, another is Glide. Okay, I will go to the main link. तुम लोग भी साथ में करना चालू कर दो. अगर नहीं करना है साथ में, just stay in there. I will upload everything on GitHub. No need to worry. Another one is Glide. Glide dependency. What do I mean by dependency? Dependency is something जो हम वहाँ पे लिखते हैं. So that is what dependency itself is. Now you can see dependencies. I will just copy this implementation. I will paste it here also. As for Glide. Glide किस लिए use करने वाले? That is a library which will help us in showing a photo, a particular photo via URL. So अगर तुम देखोगे HTML और वो सब में directly हो जाता है, पर यहाँ पे directly नहीं होता because it's Android and it's not a web. तो अगर तुम देखोगे we have some URL of photos. So that's why we are doing. I hope ये URL work करता है. Lol. Okay, never mind. It didn't even copy properly, but हाँ. Okay, वो चीज हो गया. Retrofit क्यों यूज कर रहे? Retrofit is basically for nice. Where is the dependency? I can't get it over here for what? Okay, yeah. Okay, so retrofit is basically for doing some API calls easiest as possible. Can you just stop this, please? Okay. Okay, retrofit dependencies. I will just try to complete as fast as possible by providing as much as examples or just everything. Okay, we have this also. You have to write implementation dash this dash. Now I will just copy both the stuff. I will go to build Gradle this dependencies. I hope everyone is here. I will just paste it here. I will remove dumb stuff. Implementation, every spelling is correct, and it says sync now. Sync now क्या है अब? Basically every time we add new stuff, we have to sync it again so that other files get to know that हमने कुछ add किया है, and then we can use the functionalities. I will do sync now. Okay, all good. Finally. Now you can see we have something called a list of templates. Wait, can you show the sync now? Okay, sure. You go to build again, build the second build. Okay, not the first one, the second one. Gradle script, second one. You paste both the links. I will just send both at once so that it's easy for you. Yeah, you can remove the full stop in the end if you want, but yeah, I just did it. It doesn't matter much. Okay, all good. Okay, now there is a concept of Recyclerview. What is Recyclerview? It might be a little complex to talk about right now, but I guess we can talk about that because why not? Let's. So, Recyclerview. What is Recyclerview? Recyclerview is something which will show us a list of items जहाँ पे हर चीज को हमें कोड नहीं करना. What do I mean by that? If we have something, let's say, if I have a contact, okay, तुमने contact list तो देखा होगा अपने फोन में. Now it has different names, पर सारे contacts जो दिखते हैं वो सेम ही दिखते हैं, right? Correct? If I show you, okay, I don't want to show my contact list, but let's say I show
where do we have this thing? Okay, I'm already screen sharing, right? Um, okay, can you see? Should I show my mails? Nice. I'm taking time for nothing. Uh, 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 um, can I get an example of recycler? Example images. Okay, can you see something like this? ऐसा तुम लोग ने मैसेज देखा होगा ना. कैन यू सी दिस? कैन आई क्लिक हियर? कैन आई गेट अ फोटो? ओके, कैन यू सी दिस थिंग? तुम सब लोग ने देखा होगा. कैन यू सी दिस थिंग? उसके अंदर जो मैसेज दिख रहा है वो डिफरेंट है, पर बाकी सब जगह सेम दिख रहा है. यहाँ पे टाइम दिखेगा, यहाँ पे स्टार दिखेगा. द होल व्यू इज सेम, राइट? करेक्ट. कुछ डिफरेंट तो है नहीं यहाँ पे कि ट्रेवर हैंसन को कुछ अलग दिखा है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है. इट्स लिटरली सेम फॉर ऑल, राइट? करेक्ट. सो दैट इज व्हाट रिसाइकलर व्यू हेल्प्स अस की हमें हर चीज को एक एक नहीं लिखना है. यस यस, let it be for text, let it be for images, anything, everything. That is where recycler view helps. तो इसमें क्या काम आएगा? Any list of view. अरे यार ये क्या है मुझे which में? Any list of view which you have to don't have which is similar stuff, you know. तो वो हम recycler view में दिखाते हैं. Now how do we code recycler view? I will just do one simple thing. I will go to my activity main. Let's go little minus. I will just close this project from the side. I will do this less little. I'll remove this text view because useless. Okay, I will do recycler view. I will write recycler. Can you see recycler view? Not the first one. Okay, that is recycle list. I'm talking about recycler view. I type recycler view. I do match parent because हमें पूरी list दिखानी है. Okay. Now, can you see something here? Item 0, item 1, item 2, item 3. Can you see? Can you see? Item 0, item 1, everything. What it says, just जो मैंने अभी बोला वो सारी items दिखाता है. So we are all good. We don't have to think much on that. Now obviously एक item देना पड़ेगा हमें उसको. So we write something called list item. Now हमारे पास item कैसा दिखेगा वो अभी तक ready नहीं है, right? So we will code that later on. And उसके बाद no, that's it. For now उतना ही बहुत है. Now let's code our template. कैसा दिखेगा, correct? So let's code. So let's go to project. Let's go close this Gradle script. Open this res. Open this layout and right click here. New, or just copy this whole activity main XML. Go here and paste it. Oh lol, sorry. Paste it with the name different. Meme template. Meme template item because it's an item. Good enough. Let's close this palette because useless. Go to split. What did I do? I copied this. Okay, my bad. What did I open? Okay, I went to project. I went to res layout. I did copy and I just pasted it and changed the name into meme template item. Again, name can be anything. You just have to use that name everywhere. All good. So give me a yes fast so that we can code it really quick. It's not gonna be hard. Could you show your that? Yeah, this just a second. Yeah, I just have an habit of showing my face there. I don't know. Yeah. तो मेरे को ये पूछना था लाइक आफ्टर दैट सिक्स्थ लाइन हाँ. द वन विच स्टार्टिंग एट तो हम what do you type recycler view and it Yeah. comes Yeah. You type like this, you do like something like this, and you type recycler view, it automatically comes on the first. okay. Not always first, but yeah, it depends on whatever. Yeah. So all good. Okay, everyone is giving me yes. I hope doubt is also clear for you, Kush. Okay. Now I see meme template item में मुझे recycler view दिख रहा है, पर वो तो useless है, right? Because it's just gonna be an design for an item. So let's remove this dumb thing. Now let's go to the postman. You don't have to open postman. I have it. हमें क्या आता है, हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है. We have an ID, we have a name, we have an URL, and we have a width. Do we care about width? We don't because we are gonna decide कैसा दिखेगा. So हमें दो चीज़ें मिल रही है, name and दूसरा चीज़ क्या है? Image URL. And ID. I don't think so. We have to show ID, right? Or do we have to? We can show ID. Yeah, why not? If you are getting, then why not?
Okay, we can show. So we have three things to design for about. जैसे मैसेज में क्या क्या डिजाइन हुआ है, एक टाइटल डिजाइन हुआ है, टाइटल इज बेसिकली नेम, एक सब्जेक्ट डिजाइन हुआ है, और उसके अंदर का मैसेज डिजाइन हुआ है, और टाइम डिजाइन हुआ है. हमारे पास क्या है, आईडी, नेम ऑफ द मीम और टेम्पलेट. ऑल गुड? ओके, एपिक. सो लेट्स डिजाइन इट. सो हमें इमेज आ रहा है, तो वी विल टाइप समथिंग कॉल्ड इमेज, और हमें दिखता है इमेज फिल्टर बटन. इमेज फिल्टर व्यू नहीं चाहिए. इमेज बटन, अगेन हमारा बटन नहीं है. इमेज स्विचर, वी डोंट हैव एनीथिंग स्विचर. वी हैव समथिंग कॉल्ड इमेज व्यू. नाउ इमेज व्यू और एक और इमेज व्यू है, वो ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू. नाउ यू, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. क्या डिफरेंस है एक बार चेक करो. आई विल सिलेक्ट द सेकंड वन, सॉरी द सेकंड लास्ट वन, एंड द रीजन फॉर दैट इज गूगल रिकमेंड्स इट. बट तुम्हें चेक करना है हम क्यों करने वाले हैं वो दैट. ओके, गुड नाउ. Give me 1 sec. I'm getting a call. Okay, sorry for that. Okay, so I'm gonna select app compact image view. Sorry, yeah, push. Actually, I'm not getting that auto tag kind of thing in my Android Studio. I see. So should I just give you this? That Recyclerview one also. Sure. I will just send this. अभी के लिए error होगा because I missed the last part. No worries. We just removed the recycler view. We selected image view between two. That is a homework for you. Why did we select it? But yeah, in simple thing, Google recommends it, but there is a reason. I will send this also once. Let me write. Okay. अभी width जो है, a simple logic, हमारा जो width जो है image view के लिए बड़ा होना चाहिए, right? Total size जाना चाहिए. But there should be, let's say, a border. Will it look good if there is a border or not? I guess it will look good. So I will show you. I do match parent. Height, let's say कितना height देना है? 300 dp good enough. Let's see कितना होता है. Okay, let's close this from here first of all. 300 dp. Let's see कितना. Okay, इतना जा रहा है, right? I think it's good enough. I think it's good enough. And हाँ, and then constant देते हैं. Constant क्या है इसका? ऊपर parent, left parent. So I will do top to top of parent, and then start to start off, or left to left off, both works. That can also be a homework, that why start to start off and left to left off has some difference. And I will just do parent, and हम close कर देंगे. And I think it's all good enough. So मैं ये भेज दूंगा यहाँ पे. Okay, good enough. Push, all good. Are there any problems? It is not working. What Like is I not working? pasted the code. Is it showing some error? Yeah. What error? Like the whole line, that yellow thing in your place is coming red in my place. I tried to install the dependency, but still it's not working. Okay, can you go to palette? Okay, wait, maybe. I'm not sure why is it coming, but as far as I know, maybe this depend. Wait, okay, so dependency is wrong. Are you saying something like that? Do you want to screen share? You Yeah. can screen share. The block going out of screen. Out of screen. That's new. Yeah, that's कुछ the reason for that is तुमने parent को ही close कर दिया पहले. Can you see? Constant layout को तुमने पहले ही close कर दिया, इसलिए वो error दे रहा है. हाँ. Understood? That's why it was giving an error. Okay. Now I will screen share again. Okay, I'm already screen Thanks. sharing. No worries. The block going out of screen. Do you want to screen share, Sandesh? If you wanna, you can check really quick. Okay, let's see. ऐसे कैसे बाहर जा रहा है? नहीं, वो बाहर नहीं जा रहा, वो मेरे में भी वैसा ही. अगर if you see, wait, मेरे में ऐसा नहीं दिख रहा है. Maybe you clicked on something.
Okay, show me your height. Height is 300 dp. हाँ, I don't think so there is any. अच्छा, मुझे समझा तुमने क्या किया. तुमने क्लिक किया बॉटम टू टॉप. अब बॉटम टू टॉप क्या हुआ? ऊपर की साइड स्क्रीन इतना ही है और तुम बोल रहे हो यहाँ से चालू करो और ऊपर चले जाओ. That's why it's happening. You have to do top to top off. So उससे क्या मतलब होता है? टॉप से नीचे. टॉप टू टॉप मतलब वहां से कितना है? उधर तक ही, पेरेंट ही. So you have to do top to top off. बॉटम को हटा दो और वहां पे कैपिटल टॉप लिख दो. व्हाट डज दैट मीन? टॉप से चालू करो टू टॉप ही. सो उसका मतलब क्या हुआ? टॉप से टॉप तक का ही है एंड दैट इज आल्सो पैरेंट. इट्स लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड बट इट्स you can just think, remember we are that way. Okay, you can stop your screen sharing now. Yeah. Okay, हमने एक इमेज बना दिया. सो लेट्स ट्राई अगर इमेज कैसा दिख रहा है. सो हम एक उसको पाथ देते हैं SRC इज समथिंग, आई गेस सबको पता ही होगा. इट्स जस्ट अबाउट टेलिंग कहाँ पे उसका लोकेशन है. आई प्रेस SRC. ओके, एक कलर ब्लैक आ रहा है. लेट्स सी कैसा दिखेगा कलर ब्लैक में. ओके, इट शोज इतना पार्ट मेरा उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, इमेज में, सोर्स लोकेशन. यस. सो आई गेस हमारे पास गुड इनफ है. आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ हाइट. So let's remove this. Okay, now हम एक image हमें text बताना है. करेक्ट दो. अब text बताने के लिए हमारे पास ID है और नाम है. Now tell me, should we put ID on left, name on the right, or name on the right? Sorry, या opposite. Basically ID और image, ID और name ऐसा रखना है या फिर name और ID ऐसा रखना है? Name or ID. Name or ID. Okay, ID name. Let's vote. Okay, it's 1-1. Fast. We have really less time, but it's like it won't even take much time. That's why let's do it really quick. ID name. Okay, 2-1. I'll wait for 10 seconds. 1, 2. Okay. Then I guess yeah. ID name already won. Sorry, Kush. But yeah, we will take with the what vote says. Now let's do text. So मैं खुद से लिखूंगा नहीं. I will go from main activity. अच्छा, मैंने text यहाँ से भी हटा दिया. lol. Okay, I will write on my own then. Text view. विथ कितना होना चाहिए? विथ अब मैच पेरेंट रख लेते हैं अभी के लिए. और हाइट रखना चाहिए. या रैप कंटेंट इज गुड इनफ, राइट? वो ज्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा एंड गुड इनफ. ओके, एक उसको ये कुछ लिख देते हैं सो दैट वी नो कहाँ पे है अभी वो. एंड लेट्स से नेम. ओके, सो फॉर नाउ इट्स ऑन द टॉप. और तुमने देखा होगा ये इमेज भी. ओके, हाँ, अभी के लिए. एंड अभी मुझे उसको चाहिए ऊपर नहीं, मुझे चाहिए इमेज के नीचे, राइट? आई डोंट वांट ऑन, लाइक दोनों साथ में रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, बिकॉज इट विल बेसिकली गो बिलो बिहाइंड द इमेज. सो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे टॉप टू टॉप ऑफ. अब यहाँ पे पेरेंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इमेज. पर यहाँ पे जब मैं लिखने जा रहा हूँ, ओके, आई विल गो टॉप टू टॉप. अरे ये क्या आ गया? टॉप टू टॉप ऑफ. मुझे एक कुछ आईडी जैसा दिख रहा है ना. व्हाट इज दैट आईडी? ना ये आईडी जो हमारा मीम आईडी है वो आईडी नहीं है. एवरी कंपोनेंट हैज सम आईडी. उससे आईडी से क्या होता है? वी कैन रिकॉग्नाइज इज अ गुड वर्ड. या वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है. अंडरस्टूड? सिंपल एज दैट. कुछ ज्यादा समझना नहीं है. आईडी इज जस्ट समथिंग जिससे हम जान सकते हैं कि ये कौन सा आईडी है. ना लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ आईडी दूं, ठीक है, ये इमेज व्यू को आईडी दूं. आई जस्ट टाइप आईडी. आई ऑलरेडी सी एंड्रॉइड आईडी कमिंग. एक आईडी दिया मैंने. वो आईडी क्या रहेगा? इट्स अंडरस्टैंड या राइट समथिंग जिससे सब लोग समझ जाए. तो हमारे लिए आईडी बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज क्या होने वाला है? मीम इमेज. सो इट्स अ गुड थिंग टू राइट मीम इमेज. यू कैन डू अंडरस्कोर, यू कैन डू कैपिटल, लाइक ऐसा रख सकते हो, या फिर यू कैन राइट कैपिटल IMAG, जो तुम्हें लिखना है. आई लाइक अंडरस्कोर बेटर. आई विल जस्ट सेंड यू दिस. ओके, गुड इनफ. नाउ मुझे इमेज के नीचे रखना है. सो ऑब्वियसली उसके लिए आईडी मुझे चाहिए था. सो आई विल राइट टॉप टू टॉप ऑफ. अभी देखो मीम इमेज आ गया. आगे मीम इमेज. आई विल प्रेस एंटर. अभी तुम देखोगे, ओके, वो चेंज नहीं हुआ. दैट्स समथिंग न्यू. टॉप टू बॉटम ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप टू बॉटम. wait, this is not. Okay, I did and app, that's right. Okay, cool. So top to bottom of, yes. Okay, आ गया अभी. नाउ बेसिकली हमने क्या किया? पहले हम रख रहे थे टॉप से टॉप पे ही रहना है. अब हमें करना क्या था? टॉप से बॉटम पे आना था, राइट? बिकॉज हमें उसके बॉटम में रहना है.
सो हम टॉप किसको ले रहे हैं, टॉप ले रहे इमेज को और उसके बॉटम पे लेना है। अब यही मुझे अगर लेफ्ट में होता तो टॉप उसको लेना है और लेफ्ट में उसके जाना है। अंडरस्टैंडेबल, गुड इनफ, ओके। नाउ टॉप से बॉटम मीम में आ गया, बट अभी उसका लोकेशन ऐसे हमने उसको वर्टिकल दिखा दिया, पर लेफ्ट राइट कहाँ आएगा वो नहीं बताया। सो हमें बेसिकली लेफ्ट साइड में रखना है, आईडी को लेफ्ट साइड में रखना है। सो वी विल डू समथिंग वर्ड जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट। अब इसको आईडी दे देते हैं। आईडी विल बी बेसिकली मीम आईडी, गुड इनफ। हमने क्या डिसाइड किया, आईडी नेम, राइट। ओके, सो ये हो जाएगा आईडी। ये फटाफट पेस्ट कर दो एंड लेट्स गेट डन विद। अभी ये कंट्रोल सी एंड सेम कर दो कंट्रोल वी, बिकॉज हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए। पर यहाँ पे मीम आईडी के जगह पे आ जाएगा मीम नेम, टेक्स्ट की जगह पे आ जाएगा नेम, विथ और हाइट मैच पेरेंट रैप पेरेंट है। बट अगर मैं दोनों मैच पेरेंट है विच मीन्स दे बोथ आर कोलाइडिंग वन थिंग, करेक्ट। सो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे लेफ्ट टू लेफ्ट पेरेंट नहीं रखना है, मुझे लेफ्ट टू लेफ्ट वो पर्टिकुलर चीज रखना है, राइट। इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट यहाँ पे मेरी दो चीज है, ठीक है। अब मुझे आईडी यहाँ पे रखना है और नेम यहाँ पे रखना है। सो आईडी के लिए तो लेफ्ट टू लेफ्ट पेरेंट हो गया, राइट। पर इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट पेरेंट होगा तो ये भी चला जाएगा यहाँ पे। इसके लिए आईडी होगा, राइट। आईडी इज द थिंग जिसके लेफ्ट से उसको स्टार्ट करना है, करेक्ट, गुड इनफ, अंडरस्टूड। तो हमारा नाम है, उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, आईडी से, राइट। अगर मैं पेरेंट से स्टार्ट कर दूँ तो ये तो आईडी के जगह पे चला जाएगा, करेक्ट, मेक सेंस। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेफ्ट टू लेफ्ट इज बेसिकली सेइंग मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। आईडी के लिए स्टार्ट द लेफ्ट मोस्ट साइड से चालू करना था, विच वाज स्क्रीन, विच वाज पेरेंट। बट यहाँ पे मुझे लेफ्ट टू लेफ्ट कहाँ से चालू करना है, मुझे आईडी के बाद से चालू करना है। सो मेरे लिए लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होगा, आईडी होगा यहाँ पे। सो आई विल राइट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, अभी देखोगे तो पेरेंट वो दोनों साथ में। इफ आई डू आईडी नाउ, नेम आईडी, it didn't go there, that's super weird because मैंने with रखा है match parent। I will do rep content, वो left to left जाएगा and I do right to left to right of, and वो चला sorry not left to right to left of, wait what, left to right of, sorry left, और उसके right में जाना तो left to right of। now पहली बात तो ये we have to change something called match parent and okay not match parent wrap content, and first of all ये side क्यों जा रहा है, because we have something ready with meme id। left जा रहा है, left के उसके right से जा रहा है and left के side में, which means this is also wrong, it should be more like right to right of, and now we are on the correct position. Okay, I will explain this now. Why have we done right to right of meme ID? Basically what we were doing right now, left to left of, पर जिसके मैं लेफ्ट में जा रहा था उसके लेफ्ट में उसने रखा था पेरेंट। अब वो पेरेंट के लिए है, सो वी आर ऑल्सो गोना गो दैट वे बिकॉज पेरेंट हैज लाइक द मोस्ट नॉट प्रायोरिटी वे, बट इट्स लाइक दैट इज द कंस्टेंट विच इज ऑलवेज गोना बी देयर। एंड जब हमने राइट टू राइट किया और उसके मीम जो गए, सो विच इज इसका जो राइट था हमने वो सिलेक्ट किया। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इन सिंपल वे, हम पहले सोच रहे थे इसके लेफ्ट ये है, ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन, सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन। अब आईडी के लिए लेफ्ट ये है, राइट है, इतना करेक्ट है, बराबर। इसके लिए आईडी ये है, आईडी का लेफ्ट क्या है, आईडी का राइट क्या है, करेक्ट। अब नेम के लिए लेफ्ट ये है और राइट ये है, मेक सेंस, करेक्ट। हमको यही चाहिए ना, करेक्ट, हमको यही चाहिए था। अभी हमने बोला इसका जो लेफ्ट है उसके लेफ्ट पे चले जाओ, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका लेफ्ट है, हमने क्या बोला नेम को, इसका जो लेफ्ट है उसके लेफ्ट पे चले जाओ, हमने यही बोला था ना पहले। यहाँ पे हम जो कर रहे थे इसके वजह से वो क्या हो रहा था, वो यहीं रह रहा था। पर हमें क्या चाहिए था बेसिकली, उसका अरे यार उसका जो राइट था वहां से मुझे चालू करना था, तो हमने क्या किया, उसके राइट से राइट में चालू करो, अंडरस्टूड। उसके राइट से राइट पे चालू करो, दैट्स व्हाट वी डिड हियर, राइट टू राइट ऑफ। हमारा जो इमेज था उसको करना था टॉप टू टॉप ऑफ, टॉप के टॉप से लेना था चालू, तो वो टॉप से टॉप चालू हुआ। मेरे को जो ये टेक्स्ट चाहिए था वो टॉप से, जो हम इसका जो टॉप है उसके बॉटम से चालू करना है, हमने बॉटम से चालू किया। गुड इनफ, ऑल गुड, ओके गुड इनफ।
Okay, now we have done everything correct, I hope. Name को I guess name को bold कर देना चाहिए because it doesn't look good be having just one text. तो एक बार bold कर देते हैं इसको. Bold लिख के नहीं आ रहा, एक बार वापस ट्राई करते हैं. Bold नहीं आ रहा, which means वो वैसे exist नहीं करता. ये सब चीजें actually आती है style के अंदर. So I will go inside style, not actually style. Okay, it will come under text style, and there is something bold, italic, normal. It was already normal, so we will just do bold. ये नेम खाली दिखाने के लिए अभी कर रहे हैं, बट वो बाद में चेंज हो जाएगा. मेरे इसमें ना ये नेम आईडी वाली चीज एकदम बॉटम में आ रही है और उसके नीचे कुछ यानी इट्स नॉट विजिबल, वो नीचे हो जा रहा है स्क्रीन से. Just screen share it, I guess. Top like to bottom. you see this box over here. Yeah, and for the reason for that is you are doing inside activity main, but हम वहाँ कर ही नहीं रहे. अच्छा, तो ये टेक्स्ट व्यू से लेके कहाँ Yeah. चिपका? वहाँ पे टेम्पलेट में. एंड वो चीज़ क्यों हो रहा था, एक बार तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो इसके नीचे कर दो. And the reason for that it's not working क्योंकि ऑलरेडी है. मीम आईडी कर दो. नहीं मीम आईडी आएगा. अच्छा तुमने गलत कर लिया. रुको, सुनो. दोनों हटाओ. आई विल पेस्ट इट बोथ लेटर्स टुगेदर. द रीजन फॉर दैट उसमें नीचे जा रहा था बिकॉज तुमने बोला रिसाइक्लर व्यू पूरा स्पेस ले ले और उसके बाद उसके नीचे आईडी दिखाओ. अब पूरा स्पेस ले लिया है तो उसके नीचे आईडी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बाहर जाएगा स्क्रीन पे. हाँ, इसको रैप कर दिया और फिर रखा था. हाँ तो फिर आ जाएगा. हाँ, बिकॉज रैप अभी एम्प्टी है इसलिए. मेक सेंस? ठीक है. ओके, अभी फटाफट खत्म करते हैं. चलो, इट्स ऑलरेडी 6:51. आई स्वेयर आई विल कंप्लीट बाय 7:15. सर, सो हमारा जो ये चीज़ है वो रेडी हो चुका है, बट इट स्टिल लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड. सो हाउ अबाउट आईडी जो लेफ्ट में है उसको सेंटर कर देते हैं. अच्छा लगेगा सेंटर रहेगा तो. सो हम क्या करते हैं, हम ग्रेविटी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी. सो आई विल डू ग्रेविटी एंड उसको सेंटर कर दूंगा. अभी ये सेंटर किया मैंने तो इसका आईडी एकदम बीच में चला गया. बट एज आई सेड, मुझे बीच में तो चाहिए नहीं, मुझे दोनों डिवाइड चाहिए. तो जो हमने सारी चीज़ें की वो काइंड ऑफ करेक्ट नहीं है, करेक्ट वे में नहीं है. अगर इफ़ यू रिमेंबर देयर इज़ अ लेआउट जो हमें प्रॉपरली साइड में चीज़ें करने देता है. इफ़ यू रिमेंबर, एंड दैट लेआउट वाज लीनियर लेआउट जो हमें साइड में चीज़ें करने देता है. तो हम वो करेंगे अभी. सो हम क्या करेंगे, हम एक लीनियर लेआउट बनाएंगे फटाफट. लीनियर लेआउट विद मैच पेरेंट होना चाहिए और ये होना चाहिए रैप पेरेंट. कंस्ट्रेंट जो हमने इसके लिए लिखी थी वो यहाँ पे आएगी. एंड आई विल सेंड द स्टफ, नो वरीज. जस्ट यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान दे दो. ये हटा दो एंड ये दोनों को इसमें डाल दो ना. अभी देखो क्या होता है. नाउ कैन यू सी? ओके, क्या हो गया? पहली बात ये सेंटर हटा दो. विथ को मैच पेरेंट से रैप कंटेंट कर दो एंड इसको कर दो वेट 1 एंड ये सेम को 1 कर दो. मैं अभी बताऊंगा क्यों किया हमने वो चीज़. ओके, नाउ कैन यू सी दोनों डिवाइड हो गए, प्रॉपरली डिवाइड हो गए. नाउ व्हाट वी डिड, वी बेसिकली एडेड लीनियर लेआउट. अभी हमने इसको कांस्टेंट क्यों दिया? बिकॉज लीनियर लेआउट उसके नीचे आ रहा है. करेक्ट, मेक सेंस. और ना टेक्स्ट व्यू तो आ रहा नहीं है. ओके, लेट्स मेक इट बेटर. सो आई विल डू कंट्रोल ऑल्ट एल. कंट्रोल ऑल्ट एल से थोड़ा अच्छा दिखने लगता है. अदर देन दैट वी स्टिल डोंट हैव सेंटर. सो आई विल डू ग्रेविटी सेंटर. अब वो आ गया बीच में. आई विल कॉपी द सेम थिंग फॉर अपना आईडी के लिए. ओके, सब आ गया. आईडी को भी बोल्ड कर ही देते हैं, थोड़ा अच्छा दिख जाएगा. ओके, गुड इनफ. It looks really blur right now, but I hope you understand for the first project. ओके, अब लीनियर लेआउट पूरा पेस्ट कर दो. वो दोनों टेक्स्ट व्यू को हटा दो. लीनियर लेआउट इमेज व्यू के नीचे आ रहा है. अब वो जो वेट डाला था हमने, वो वेट बेसिकली क्या है, वो डिफाइन कर रहा है कि ये जो चीज़ है उसका वेट कितना है. अभी दोनों को मैंने 1-1 किया इसलिए वो दोनों डिवाइड हो गए. अगर मैंने और एक 1 किया होता तो वो सब ऐसे ऐसे. बट लेट्स से
मैंने एक को 2 किया होता, which means वो और ज़्यादा लेता. Message is half. Okay, I will send one thing. Linear layout को भी एक ID दे देते हैं. Let's say meme info. Meme info I guess makes sense because यहाँ पे उसका ID और info है. So ये हो गया अपना linear layout और ये हो गया अपना text view 1, text view 2. I hope इतना समझ में आ गया. एंड आज के लिए टू अंडरस्टैंड स्टफ, ओके, टू अंडरस्टैंड स्टफ इतना बहुत है. नाउ आई विल लाइक टू टेल यू ऑल थोड़ा फन के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट जो मैं कर रहा हूँ, बट आज के लिए जो अभी हमने सीखा है दैट इज वे मोर देन इनफ. नाउ वी विल डू जस्ट फन. मैं फटाफट ऐप बना दूंगा टू मेक द मीम टेम्पलेट, बिकॉज जो रिसाइकलर व्यू है उसके साथ जो चीज़ें करनी होती है दैट विल गो वे बियॉन्ड जो हमने सीखा है उसके लिए. एंड यू विल जस्ट बी लाइक ओके ये सब वे बियॉन्ड जा रहा है. इट विल वी विल हैव मोर गुड सेशंस ऑन चीज़ें कैसे एक्सप्लेन हो रही है क्या हो रही है. बट फॉर नाउ आई वॉन्ट यू टू जस्ट कॉपी पेस्ट जो मैं करूँगा एंड जस्ट हैव फन जो हम बना रहे. ऑल अग्री ऑन इट? और किसी को कुछ है प्रॉब्लम है सीखना है कुछ, देन दे कैन से यस. बट द रीजन वी आर डूइंग हियर बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए. सो फॉर नाउ वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, बट मैं चीज़ें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करूँगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, पर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा. एंड जस्ट यू कैन जस्ट रिलैक्स, copy paste stuff, and we will just have a good meme template project. Good enough? All agree? Then we can go ahead, else we can follow the same stuff again, but उसको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. या एंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली फॉर अ बेसिक थिंग टू गेट स्टार्टेड. ओके, ऑल अग्री? सैफ, कुश, साहिल, संदेश ऑलरेडी सेड. ओके ओके गुड. नाउ हमने ये कर लिया. नाउ हमने एक रिसाइकलर व्यू था, तो हम रिसाइकलर व्यू में जाते हैं. एक सिंपल जो लिस्ट आइटम था वो एम्प्टी था, इसलिए ये दिख रहा था, राइट? बट हमारे पास आइटम है अभी, सो वी विल रिमूव दिस. हम वापस अच्छे से लिखेंगे लिस्ट. ओके लिस्ट, अरे यार आई विल जस्ट गो बैक, लिस्ट आइटम, एंड मेरे पास अभी एक आ गया मीम टेम्पलेट आइटम. ठीक है, कर लेते हैं. ओके, मुझे कुछ दिखने लग गया यहाँ पे. कैन यू सी ID नेम? नाउ द रीजन फॉर दैट कि हमें ये चीज़ दिख रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे मैच पेरेंट डाल दिया. नाउ मैच पेरेंट की वजह से हमें खाली एक ही चीज़ दिख रहा है. बाय बिकॉज एक आइटम पूरा स्क्रीन ले रहा है. मेक सेंस? समझा सबको? अगर यहीं पे मैं इसको रैप कंटेंट कर दूं, ओके ओके मैंने विथ को रैप कंटेंट कर दिया, सॉरी, हाइट को रैप कंटेंट करना है. नाउ इफ आई गो टू एक्टिविटी मेन, क्या हमें दो चीज़ें दिख रही है? दिख रही है दो चीज़ें. वाई क्यों दिख रही है? क्योंकि हम पहले मैच पेरेंट कर रहे थे. ओके गुड इनफ. नाउ जस्ट रिलैक्स. मैंने क्या चेंज किया? मीम टेम्पलेट में हाइट का रैप कंटेंट किया और कुछ नहीं किया, और एक्टिविटी मेन में मैंने ये डाल दिया रिसाइकलर व्यू. Now just relax. I will do stuff quick. I will try to explain as much as possible. But now don't think much on the learning. Just try to have fun. जो हम बनाने वाले हैं अभी, ठीक है? This is good for us. You can clap for yourself if you want. But हमने अच्छा खासा एंड्रॉइड की लेआउट सीख ली है. सिंपल रिसाइकलर व्यू की थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स चला गया हमें, बट यू कैन आई गेस that's enough for now. But I won't go much right now because वो actually is important. So yeah. Now I will just create a open another project because I will need some boilerplate code. So I will go to Solana Lidroid. No, not Solana Lidroid. Sorry, just Lidroid if I'm not wrong. Do I exist? Okay, does it exist? So अभी मैं basically क्या करने वाला हूँ? I will just copy a boilerplate adapter and all that stuff. So मैं एक class बना दूँगा meme adapter. What is meme adapter? Basically यहाँ पे जो एक रिसाइकलर व्यू का जो आइटम है उसके लिए जो चीज़ें करनी होती है वो सारी अडेप्टर में आती है. बिकॉज हमें एक आइटम को एक आइटम के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, राइट? वी हैव टू गेट दैट ID, वी हैव टू गेट दैट नेम, इमेज. तो उसके लिए वो अडेप्टर इज द प्लेस जहाँ पे हमें चीज़ें करनी होती है. Okay, it's kind of broken right now, it seems like. I will just go here, app, SRC. You don't have to much think on it right now, but हमारा जो चीज़ होगा as far as I know, adapter. Okay, यहाँ पे adapter है. I hope
कोई एक अच्छा अडेप्टर मिल जाए, आई विल जस्ट गो ऑल क्वेश्चंस अडेप्टर। आई होप एक ठीक ठाक अडेप्टर है। Okay, it seems like ठीक ठाक adapter. I will go inside meme adapter. I will control A, control V. I will change the name again. तुम्हें कुछ अभी करना नहीं है. I will tell you वो टाइम पे proper code मिल जाएगा. I will also provide GitHub repository. But for now, just follow along. Okay, you don't have to copy paste now. Just chill out and we will have fun. Okay. Adapter यहाँ पे location different है. Location change कर देते हैं. यहाँ पे we are getting some errors. उसको निकाल देते हैं because we don't have those files and we don't even need those files right now. We don't need this weird stuff. Let's remove those stuff. All question list ये सब भी नहीं चाहिए अभी के लिए. हमारे पास आइटम है, meme template item. Set data ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, but for now I will just let it be. I guess that is useful. ये सब भी हटा देते हैं. ये सब फालतू चीज़ें पता नहीं मैंने क्या लिखी थी वो टाइम पे, बट हाँ, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर नहीं चाहिए. सेट ऑन क्लिक लिस्टनर इज बेसिकली हर आइटम को अगर कुछ क्लिक करना हो, जैसे तुम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो एक दूसरा चीज खुला होता है विथ वही कॉन्टैक्ट का लिस्ट, राइट? वो वही कॉन्टैक्ट का डिटेल सेक्शन. ओके ओके इतना इज गुड इनफ फॉर नाउ. रिमूव दिस. Get item count, return the number of items in the list, get data item count, view holder. Let's remove all the stuff. यहाँ से सब हटा देते हैं. ना हमारे पास एक इमेज था, राइट? इमेज, तो हम वो नाम लिख देंगे मीम इमेज, और उसका जो टाइप था, मीम इमेज का जो टाइप था ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू. बट वी कैन डू द सेम थिंग. हम बस कॉपी कर लेंगे ऐप कॉम्पैक्ट, और रिलेटिव लेआउट पहन यही है. और फाइंड व्यू आईडी, हमारा आईडी क्या था? हमारा आईडी था मीम इमेज. आई विल कॉपी पेस्ट. अभी देखोगे वो रेड चीज चला गया, एंड वी कैन ऑल्सो गो हियर. ओके, टेक्स्ट व्यू मीम आईडी, मीम नेम. हमारा आईडी जो था वो क्या था? मीम. ओके, हमारा मीम नेम था और मीम आईडी था. सेट ऑन क्लिक ऐसा हम कुछ नहीं चाहिए अभी, फालतू चीजें. ओके, ठीक है. आई विल जस्ट क्लीन दिस ऑल द स्टफ. सो ठीक है, वो चीज़ भी हो गया. नाउ अदर बॉयलर प्लेट आई विल बी नीडिंग टू सेट अप द रिसाइकलर व्यू. बेसिकली उसको लिस्ट लाना और वो सब लाना. सो आई विल गो अगेन इन द कोड एंड आई विल जस्ट गेट सम स्टफ फ्रॉम जो मैंने यूज़ किया होगा पहले, बिकॉज एज आई सेड यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, एवरीवन गूगल्स इट, बट गूगल करते वक्त अभी थोड़ा टाइम चला जाता. सो आई हैव द कोड हियर, सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग इट. Okay, this adapter, control F, where else is it getting used? Okay, I'll just go in whole space. Okay, this all question adapter. We don't need that. Set up Recyclerview, no. I think I may have chosen, yep, I have chosen something weird file, so I will just choose a beta file, which is easy to copy paste. I can choose something called home fragment if possible. No need to think what is home fragment, nothing else, just yeah, contest page adapter. Maybe I can use this display contest. Okay, I think I'll just Google them. I will just Google retrofit example, retrofit Android example. हमें API कॉल्स करनी है, तो वो अभी करने के लिए आई विल जस्ट कॉपी अ बॉयलर प्लेट कोड जो होगा ये क्लास API क्लाइंट का. आई विल क्रिएट अ क्लास. क्लास का नाम दे देंगे मीम API. API विल बी कैपिटल बिकॉज आई लाइक दैट वे. यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. वी विल रिमूव दिस. रेट्रोफिट ऑल्ट एंटर, ठीक है, ऑल्ट एंटर कर देंगे. ओके, मैंने जावा फाइल बना दिया क्या? सॉरी. मीम API. I will copy the whole stuff. The funny good thing is, if I copy it here, it should be asking me Java से Kotlin code करना है क्या? So if you have a Kotlin code like that, you can always do that way, and it's really cool. Okay, ये जो भी है Alt Enter. क्यों चाहिए मुझे ये interceptor? This is really weird. Usually नहीं चाहिए होता है. So I will just remove these things.
I don't know why we need that, but okay. We have builder. Yeah, we don't need this. This is a dumb example. Um, this is why I hate doing Google in tutorial, but whatever. I don't have a proper example right now. Lol. Sorry for that. Okay, this is way adapter API interface. Set endpoint build API. I guess this is yep. This is the one. I'll just copy the whole stuff. Sorry for the wait. Sorry for the wait. I'll just do me. What is this API interface? Do we have something called that? We don't need it here to be honest. Okay, this is really embarrassing. I'm not getting a good code which I can just copy right now. Lol. I hope section.io we have a good copy stuff which I can do it right now, please. I hope this is the one. Please be the one. I'm really sorry for this. I'll just remove the dumb stuff which we do not need. This thing. Okay. Uh, it's really sorry for this. Um, this is I would like to create on me, but I don't have any idea how to. Basically, what is the syntax right now? So can we not get a Anam? Do you have any example of retrofit which I can use right now? I would really like it because it's really embarrassing right now. Is the chat killing me? No, that's really awesome. Lol. So I don't think we need a model right now, but okay. Okay. Yes. Finally, we got a good example. Good example. I'll just copy this whole thing. Okay. Finally, post data, right? So I'll just copy. Okay, I got some weird stuff. Sorry for all that, but yeah, I'll just copy this. Um, do we need that? It's just a function directly, right? So I can use it. That's even better. I'll just create a data class. Data class. To type the image. Data class. Meme. Meme will basically have an ID. ID is an integer, if I'm not wrong. It is an integer, but it's a big integer, so I will just do a string. ID, then it has name, is again a string. Okay, what the what? All okay. Val name string, and val we have image URL. So URL image URL string. Okay, sorry for that again. Okay, good enough. So what this data class is basically, we have just defined what a meme has, and that's more than enough. I will refactor the file name to meme. What is it saying? Okay, it has to be capital. My bad. Refactor it to. Okay, good enough. Now meme API is not at all needed, so let's remove that. Meme adapter has some errors. I already know that. I have some code which I have here, which I'll just copy paste right now. Really sorry for the leak, but I think we have finally gotten some errors, so that's good at least. We don't need this post and all that stuff, so I will remove so many dumb comments right now. So I will just remove it. Okay, what was our base URL? Our base URL was okay. Let me just close the stuff because I'm really getting confused. Our base URL is get memes. Let's remove this stuff. We don't need any parameters. Get memes. Let me remove these things. JSON convert. Do we not have JSON? Okay, I forgot this another library which we need. JSON. We did not talk about having JSON. Okay.
Really sorry for that, but yeah, this is also one thing. I will give all the GitHub code right now. Really sorry for that. That I was not able to complete, but it's gonna would have taken ages. Ah, now it should be done really quick. It's building, which is gonna take some time. Again, sync now, and we should be getting our JSON thing. Okay, epic. Let's remove this comments. Basically, we are doing API call. This is nothing but a syntax. No one has to remember it. We have already talked about what is retrofit API for you here. Retrofit API, we don't need that, and that is why I have problem with the NQ stuff. The data model here will be our data model, which is here meme. It should be get, and basically we have to create a adapt API. So I will create meme API, and I will just create this interface right now. API post, it should be more like get, and the value is, for us the URL was get meme, so this is what it is, and body will be nothing but what's the name, meme. So yeah, this is that. Why, what am I doing right now? Import. This is nothing but an interface which will let us do the stuff. Sorry, get the meme. So that's again a proper way to handle these things which are happening right now. I could have done that way which you are doing there, but it is not. Yeah, I myself won't tell. But for now, don't need to think what's happening. I'm really sorry for the wait, but yeah, meme API. It's more like get memes. Meme API. Okay, here it will come meme. What is the name job here? Do we need some name job? Okay, we don't need that. Yeah. So we don't need the model right now, but yeah, we can always have it later. So that's that one thing. Get memes. Now get memes doesn't need actually anything. Yeah, it doesn't need a body. It will just give us a list of. Sorry, this will just basically give a list of, as we saw, it was but nothing but a list of meme templates. That's why we'll be getting a list of meme, nothing else. Some import statements which I have to do. Let's remove the data model directly. Control R, and let's do meme. Let's do replace all, where we don't have to type again and again. Retrofit to, what does it says? Type mismatch, change type to call me. Okay, good enough. Okay, what did we do here, lol? Okay, now just type mismatch, change type to this. Remove constructor call. No, why? Okay, my bad. On response, add override. We don't need all these things. Let's remove these things. Surround with null check, which is not needed here. This thing. Is everyone still there? I'm really sorry for all this stuff, by the way. Okay. Yeah. I will remove these things. I hope the error is gone. What is this error saying? Type mismatch, no name provided, but callback list was expected. Because it's saying we need some kind of list here. Okay, what does it says? Implement members. Okay, let's implement the members. Let's remove this
Yeah, let's remove this all the dumb stuff which we were doing earlier. We got all the code here directly. Okay, what did I do? Okay, so basically what we did, we just have been doing the API calls right now. Now, on response, whatever we get from the response, which is gonna be coming from here, so we get some data, right? Now, this is gonna be little tricky, but I will try my best to understand. So we got some response. Response is basically a list of me. Now let me just check if I have been doing all this stuff correct, because the retrofit part is little sometimes hard to understand. But yeah, call.enqueue callback. Uh, um, we get some response and then we get the response.body. Okay, so let's do this one thing. I do response dot body. Okay, sorry, response dot body dot to string, and I just do a big toast. Most probably it will not work, but let's see. This basically I'm just gonna show something on the screen, and we have not even built it yet. So that's also really funny. What is the error? Okay, this has main activity, and what else is the error? Should have been gone by now. Okay, yeah, I forgot this one thing to do, which is toast dot length long. Good enough. Meme adapter has still some errors, so let's um, meme list of meme. But yeah, for now, let's not show it. Let's just have it as I have let's have variable meme list of size of list inside is meme. Let it be basically a list of an empty list, so that we don't have any problem with memlist.size. Not enough app component. We have to import this, find view, and okay, we are good to go. Let's run the stuff. So that first of all, let me just close the stuff, else my PC will just break right away. I think it's already kind of breaking, but I will just try to close everything which I had opened ages ago. It seems like we are good to go. I will just close this lid droid thing, the other Android Studio, because that also takes same amount of RAM. Okay, are you all still with me? Lol. We are finally building. We are not gonna see the result because there is one small two, three small things are remaining, really small stuff. It's already 7:17. Okay, I'm really, really sorry. I took this big one, but yeah, that was really quick. I know. Um, you don't need to understand right now. To be honest, that's actually way complex stuff. But yeah, just have fun right now. And I know it's not fun at all. It's getting weird because it's taking ages to run the build stuff. But this is the first time I'm building, so it will take some time to build. I should have just built on my phone, but I have to show it though. Okay, voice is also kind of gone. Yeah, I use Linux. Yep. Give me one sec. Yes, I use Arch Linux. Yes. Okay, what's happening on build? Let's see. Okay, finally done. And the app will break. App will just break right away. Did it break? Okay, it hasn't. It's installing right now. Let's see if it breaks. Did it break? What happened? Is emulator slow? Okay. Is it breaking? What's happening? Is it slow or? Yep, my emulator has is lagging. I guess. Yeah. I'll just close some stuff. Yep, I will just close some stuff. No idea why it's lagging, but we should be seeing some stuff. Also, yes, we do not need it now. It's not showing. That's
Pretty weird. Is it working though? Let's close this. Okay, so it is working, I guess. It's not showing anything. That's super weird. Okay. Or my PC is dying. I have no idea what is wrong, but see the main activity, and let me go to our activity main Recyclerview, and it should have been visible. Okay, I'll just close again and I will just try to open it again. I see Yadav here, lol. Meme, and I will keep looking on the ID if I see something. I have no idea why it's not showing, but it should have been showing something. Unless and until we do not have any. What? Should be showing. That's super weird. Main activity, match parent, everything is correct. Am I forgetting something? I don't think so. I'm forgetting. Yeah. Should have been showing us some stuff, but it's not showing, which is super weird. Am I forgetting something which I didn't do? No, it should be showing. Yeah. Hello. Yeah. So what's the update? I just joined. Like, We are doing it. So I have no idea why it's not showing some stuff which I have done, but yeah, show other me than the that, adapter. oh yes, I'm done. Okay. Okay, then everything is good then. My bad. Yeah, everything is good. We It's just don't have working. any. Yeah, we just don't have any list to show right now. That's why it's not showing. I'm also done. Yeah, I was thinking that Recyclerview will show something, but there is no list I have given to it. Yeah, It I've shows in the XML a little bit, but it yes. won't show you It's unless it's you it's give it's the in list. showing in XML because we are designing there, so obviously it will show there. But in real, we have not provided any list here, which is remain. Okay. So to show that, let's do one thing. Let's remove this recycler view for now, and let's just shoot this. I will do get meme and here get memes. Now let's run. It should one option either it will give error or it will just not show anything or it will show anything. Most chances are it will give error because usually that's what happens. But you get to see okay, it gave us error which was okay, HTTP permission denied. Okay, I forgot. So now let's talk about Android manifest. Android manifest is basically a file where you add all the rules, permissions. Now this application basically needs a permission of having internet connection. So yes, you are right. Everything has to be added there before getting it. Now having internet permission is really not that important for anyone. Any app can use Android's okay, it keeps crashing. That's what I needed. And the reason is an operation is not implemented, which is what? Okay, lol. So yes, this also happens. If you have a to-do like that, okay, my bad. Sorry. Um, I'll just do error. Okay, now finally we should see something. Or it should close. I don't know. Something should happen. Okay, error. Let's see what was the error. So we do something like throwable dot message dot to string. So we will see what's the error. It can be anything like the type of data. The both are not same, which I'm showing here and there. Begin object at line 1, but column 2 was path. Okay, this is like the worst error to get because I have no idea how to do that. It's something related with list, I'm pretty sure. But how about I do this app by night, complete it, and do it because it's already 7:30 and the recording will go more than 230 hours. Is it fine? Can we do the? Can I just post the whole application by night on GitHub and will it be fine? Because I have to look on the list and how the data is coming, and I kind of went really fast, which is really dumb. But yeah, if everything is good with you all, I can share the GitHub link. I will be done by like by 9 itself. It was as far as I know, the mistake was related with all the link and all here.
So if everyone is ready with that, I will just close the session because I'm pretty sure the recording went more than 2:30. So yeah, all good. Is it okay? I will share the link on the Git of the GitHub really quick. You can definitely copy the whole project, make on your own, add stuff, which I will also give resources to. So I'm really so sorry how I had to end the session like this, but if everything is fine with this, then all good. Can we edit the session? Can we end the session? Okay. If you want to take a picture, then we can take a picture. Um, if possible, Sure. if I, everyone. I, I was like absent for most of the session. So what did you guys actually make? Like Uh, anybody can answer sure, yeah. except then Dheeraj. Like, am I visible and audible? Hello. Yeah, you're audible. Yeah. Anyone can talk. Steve, Sahil, Saif, or Sandesh. Just a little bit of summary if wants possible. Like got taken away from the session. What actually did Dheeraj teach in this session because I was not there. Okay, so initially we just look at the file structure. We dive deep into the classes and objects. How does it work and all. Then mainly we did work in that XML file. We created our own XML file known as that uh, meme template. Then फिर वही एक्सप्लोर किया we explored different things like the text view. We worked with how it was kind of CSS thing. It was Yes. pretty fun. And like initial Android development के stage पे it was good. Okay, so that's really great. And I also see Steve writing, we understood the layout structure of apps and especially left to right of right. Okay, I think so. It's some kind. Okay, set up all the views. Basically how to build the layout of the screen and set up all the views. Yeah, that's really I great. was really excited about making the meme template, but I just forgot how complex it will become for just one project, you know. So yeah, it got. I guess the whole session was about just to give you intro about Android. The whole bootcamp was about just to give you introduced to the Android development itself, and the main stuff directly starts with the design itself, talking about XML, how layouts works, and different Okay. layouts and all that works. So yeah. Okay, Okay. we can just end the session. I'm just really, I Yeah, wait, just, I'll yeah, I just give. can't speak more. Yeah. So in the summary, we'll be giving you any resources you can further work in the future because you have to Yes. take it if you feel like you can take it ahead. And I'll be available. Loaded will be available on Discord. Dheeraj will be and Ishir will be available. If you have any doubts regarding this session, like you can ask on Discord or anything that you start to pursue, Oh, go more into database I, and I, queries. You I can ask. just saw Yes. Cerritus Coder's mail came right now. Two mails for the meeting link. Okay, so I'll just, if you Yeah, guys can turn on your I'm camera, so we'll just end the exhausted. session quick because I the still can't believe I took 2 hour session. It was more supposed to be 1 hour 30 or something, but I just kept okay, going, kept and going. we are also yeah, I hope you guys are also not that much tired. Okay, Sahil is like literally sitting in the PC saying literally, yeah, sure. I mean, yes, Android Studio can be. Okay, so I'll just take a screenshot. Sandesh, if you can, if you're comfortable, you can turn on your camera. Okay, I took a screenshot. I'll just wait. You can just say in the chat if you can turn on your camera or not. Yeah. Wait, I'll just do this. I think I took pretty many, like lot of screenshots. So I guess we'll end the session. I Most will send the app right away in the night. which Make app? some memes out of it. Just milk the whole app, okay? And add in all your resume, add all your stuff, everything, do everything with it, and just have fun. Yes, Fan no, meeting. no, Okay, not that's on Discord. yes. Yes.
because that Oh yeah, kind we of. didn't do spam today. So let's spam while going. I don't know. Yeah, sure. What should we? I mean, I maybe mean, try to express. So anyways, I will go. I'm just okay, super thirsty. bye. Okay, bye.